shortest program for BBF, hopefully. Mostly all allocation is done. We have all loaded. We have through trial and error. We have all figured out what some mistakes are happening. We're looking at the short allocation files, and we figured out most people have figured out everything. Still, we are getting a lot of queries. So what we have done is we have just listed 4-5 common mistakes that people are doing, and after that we'll straight go to Q&A sessions so that members can ask whatever questions they want to ask. It's a very short, sweet program for today. So I've got just a 5-minute presentation. So there goes. So these are the common mistakes which we are repeatedly hearing from members what they are doing. Right? Just list out those 4-5 issues. Just be careful, and then Baki. Love to hear your experiences and straight to the Q&A session. One is people are forgetting to deallocate. So when we load the allocation file, we have based on ledger credits, those allocations are in place. Very good, achhi baat hai. But then next day you load the file. This person who is traded today would become 0 tomorrow, go into debit the next day. We need to load a file and make it 0. If you don't do it, all your money will start getting used. Apart from the fact it's non-compliance, you'll run out of money. This is something we need to take care. So please keep a track of what has been allocated so far, and please do some kind of reconciliation there. A purchase against early paying, many people had assumed that there is no difficulty early paying kar diya, but early paying ka margin gets dropped at the end of the day. But if you have purchased against early paying and not allocated anything, that will lead to penalty. So please, you have to allocate. If somebody has sold in cash market and purchased any other segment, taken a position in any other segment, we need to allocate some money there. And insufficient free allocation. Now, what happens is when, suppose we have allocated 100 rupees in the system, then we load a file where we are deallocating for 45 people and reallocating for 45. If we load the file gets uploaded immediately, but all don't run together. So it will be quite possible that new allocation to ho gaya, lekin new allocation deallocation release nahi hua. So some new allocations may happen, some may not happen. Some deallocations definitely happen. So it is always sensible to please load the deallocation file, wait for half a minute, whatever, and then do the addition. Prioritize the downward over the upwards. This is a compliance issue which is not immediate penalty. You cannot allocate too much to pro. Right? Only the pro money. Now, if the client is not trading, right, we cannot say कि बस client सौदा नहीं कर रहा तो उसको कम allocate पूरा pro में कर देंगे. You can't do that. Keep it in unallocated if required, but please don't over allocate to pro compared to what is the actual pro money in the system. This will lead to a serious compliance issue. In fact, one senior SEBI officer said कि one broker had allocated 3,000 crores to pro. इतना उसका net worth ही बंदे का 100 crore है. How can he allocate 3 crores? Because initially everybody is putting everything on pro. That is not proper. Please, there will be a regulatory scrutiny of what if allocated to pro and how much money is lying with you. And finally, common sense, keep an eye on 50-50, keep an eye on the RRM, because 10% of client money is getting used. 10% of client money is not usable if you go from pro. So that's where we are. So these are the common mistakes. We have got some relief in the sense that T+4, some things can be added, some things can be subtracted. But yeah, that's it. These are the common mistakes, but I would love to. This is not a webinar in the 2 cents of them. It's really a Q&A session. Love to go on the questions straight. We have officials from 3 CCs who have confirmed. ICCL is here. I think NCDEX CCL is also here. Has MCX joined in? I think MCX is joining, sir. They are joining it, and yes. NCL couldn't join. There are some issues, so that's where we are. We can go straight to Q&A. And if somebody wants to add a point, boss, BBF has not realized the point. Please share. This is what the session is. It's a different kind of one. You speak. Yes, sir. Visuji, your question, please. Mr. Vasu. Visuji. Shailesh, your question. Visuji, yes, you can say. Shailesh, your question, please.
Shailesh ji, your question. Shailesh ji, please unmute yourself. नहीं unmute your. Yes, yes. आशीष भाई आ गया बस. Okay. My question is, which type of margin will be blocked, like minimum margin or VAR, LM, and M2M loss? तो M2M will be blocked, मतलब block तो पूरा ही होता है, लेकिन जो पेनल्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो, यानी फॉर एग्जांपल मेरे क्लाइंट को मैंने कल 1 लाख रुपीस का लिमिट दिया था, भी उसने कुछ ट्रेड किया है, एज्यूम करो उसका मिनिमम मार्जिन है 20,000 और M2M लॉस भी हो गया है और मोर 5,000. तो जब दूसरे दिन मैं उसको लिमिट कम करूंगा क्योंकि अभी उसका ट्रेड फिनिश हो गया है, तो मैं 20,000 तक उसका करूंगा कम या 25,000 तक? देखो तो आप बेसिकली 20,000 के नीचे आज उसने मंडे को माल लिया, उसका पोजीशन खड़ा है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, यस, कैश सेगमेंट की बात हो रही है, उसका पोजीशन खड़ा है, तो 20,000 उसका 20% फ्लैट रेट तो लगेगा. यस, ठीक है, तो 20,000 तक यदि आपने एलोकेट किया तो आपको पेनल्टी नहीं लगेगी. ओके, यदि ऑलरेडी लाख रुपए एलोकेट कर दिया, उसने 20+5 यूज किया हुआ है, तो एक पर्टिकुलर कुछ सीसी है, वो बोल रहे हैं पूरा तो जीरो भी करना तो रुकूंगा नहीं, कोई सीसी बोल रहे हैं कि नहीं जितना यूटिलाइज है उसके नीचे मैं जाने नहीं दूंगा. नहीं तो यूटिलाइज 25 एज्यूम करना है या 20,000? यानी मेरे I think 1 cc is blocking up to 25. Can somebody confirm? किशोर जी? क्या कंफर्म क्या है? वो बेसिकली जो डाउनलोड एलोकेट करने चाहते हैं, यदि ऑलरेडी मार्जिन यूज्ड है, तो वो मार्क टू मार्क मार्जिन यूज्ड है उसको भी पकड़ता है ना? यस यस, फुल मार्जिन करेंटली सिस्टम फुल पकड़ रहा है सब, एक सीसी में. एनसीएल में. हाँ, एनसीएल में डेफिनेटली पकड़ रहा है. कैन या एनसीएल में डेफिनेटली पकड़. कैश सेगमेंट तो ये दो जगह मेजर है. ठीक है शैलेश भाई, does that answer the question? Yeah, okay, thank you. Okay sir. Rohit ji, your question, please. हेलो. हाँ बोलिए रोहित भाई. हाँ सर, बस छोटा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए कि जो मान लीजिए शॉर्ट एलोकेशन का फाइल मैंने किया, ठीक है, उसमें एक वो ना आप अपना सीसी भी बताए ना, कौन सी सीसी से डील कर रहे थे तो आसान हो जाता है. एनएससीएल हाँ. जी. तो अभी शॉर्ट एलोकेशन किया, मुझे शॉर्ट एलोकेशन का फाइल तो आया, बट उसके में जो क्लाइंट्स शॉर्ट एलोकेशन तो हुए, रोहित भाई एक मिनट. हाँ आप बोलिए, सॉरी. हाँ ओके, जो भी क्लाइंट के अमाउंट आ रहे हैं शॉर्ट एलोकेशन में, तो मुझे जो भी अपलोड करना है इनका वापस, जो अपना कल का सर्कुलर आया था, राइट, 586 में, तो ये T+4 जो है, S4 जो, तो उसके अकॉर्डिंग अपलोड करना है या नहीं, आपको अपलोड T+4 में अपलोड नहीं करना, खाली उनको इन्फॉर्म करना. अपलोड में कुछ नहीं करना. ओके, अपलोड कुछ नहीं करना है, तो अपलोड कुछ नहीं करना है. T+4 में खाली सी पॉइंट है, सपोज आपने सीसी ने बोला भैया 100 रुपये मार्जिन था और तूने तो खाली 90 अलॉट किया है, तो 10 पे तुझे पेनल्टी लगाने वाला हूँ, तो फिर आप 4 दिन बाद बोल सकते हो कि जो 10 पे आप प्लीज पेनल्टी मत लगाएं, बिकॉज दूसरे सीसी में पड़ा था. खाली आपको डिक्लेरेशन देना है, फिर बाकी इंस्पेक्शन में चेक करेंगे आपने सही डिक्लेरेशन दिया कि खोटा दिया. ये पेनल्टी जो उसमें शो कर रहा है वो माइनस हो जाएगा कि नहीं आएगा? नहीं, वो यदि आपने बोल दिया कि भाई 10 रुपए मैंने कलेक्ट कर लिया है, वो 10 का शॉर्टेज है और 10 दूसरे सीसी में पड़ा हुआ था, तो आपको पेनल्टी नहीं लगेगी. तो वो बोलने के लिए तो रिपोर्ट करना ही पड़ेगा ना बेसिकली. नहीं, आपको एलोकेट नहीं करना है, खाली रिपोर्टिंग में डालना है. ओके, रिपोर्टिंग में डालना है, एलोकेट नहीं करना है. तो बट वो जो रिपोर्टिंग कर रहा है वो T+4 4 दिन का टाइम होता है. मतलब अच्छा, बेसिकली वो T+4 तक नहीं जाना है, बट T+ तो 1 2 3 वो जो फाइल आ रहा है सर, अरे आप सब मंडे को आपने अपलोड किया जी, ठीक है, और मंडे को शॉर्ट आया, शॉर्ट गलती से शॉर्ट हो गया, लेकिन उसका दूसरे सीसी में पड़ा हुआ था, तो ट्यूसडे को आया मैसेज की बहुत ही तुम्हारा गड़बड़ है, राइट. ठीक है, तो थर्सडे तक आपका टाइम है. आप सीसी को बता सकते हो कि दूसरे में था, प्लीज पेनल्टी मत लगाना. वो आपकी बात विश्वास कर लेंगे और पेनल्टी नहीं लगाएंगे. आपको एलोकेशन के अंदर कोई मस्ती नहीं करनी है, कुछ चेंज नहीं करना. ओके सर, ठीक है. दूसरा क्वेश्चन ये था कि सपोज मैंने एक क्लाइंट का मार्जिन रिप्लेस था, ठीक है, बट उसने सेल किया, उसका मैं ईपीआई करने का रिक्वेस्ट डाला था अनप्लेस करके, एक्सचेंज की तरफ से मुझे शेयर्स लेट आए, लेट नाइट को. वो अपना प्रॉब्लम है. वो अपना प्रॉब्लम है. तो ये और सबका मतलब आप ये कह रहे हो कि उसने माल बेचा लेकिन अर्ली पे नहीं कर पाए.
जो भी नहीं reason, कर पाए, अरे क्यों नहीं reason कर ये पाए? कि- बिकॉज रिप्लेस रिलीज आया, लेट आया, ये आया, वो आया, जो भी राइट reason, राइट उसका अर्ली हाँ पे नहीं हो पाया, ठीक है। जी तो एनसीएल ने आपको ऑप्शन दिया है, नहीं एनसीएल का वो ऑप्शन का एक्चुअली एनसीएल वाले है नहीं, मैं उसका जवाब नहीं दे सकता, बट सर वो अपना प्रॉब्लम हो गया। तो बट सर इसमें देखा जाए तो एनएसएल अगर लेट नाइट रिलीज करेगा तो फिर कैसे ईपीआई कर पाएंगे, उसका टाइम अरे चला जाएगा कल हमारा। कल को सीसी बोलेगा तुमने रिप्लेस माल बेचने क्यों दिया, तो रिप्लेस था। सर ये आर्ग्यूमेंट का हर आर्ग्यूमेंट, हर तर्क का तर्क मिल जाएगा, बट अभी राइट नाउ ये अपना प्रॉब्लम है, लेकिन सर मैं इसको नोट कर रहा हूँ, आई टेक इट अप विद द रेगुलेटर्स एंड ट्राई टू फाइंड द वे आउट। ओके सर एक और है, हाँ। सपोज मान लीजिए क्लाइंट ने मुझे सेम डे में फंड देता है, हाँ। मैंने एक अलोकेट कर दिया और सेम डे में मुझे क्लाइंट का फंड आ गया, हाँ, उस केस में मतलब अलोकेशन का टाइम कैसा रहेगा, मतलब कैसे करना है? सेम डे आपको फंड आ गया, जी सपोज मैं ऑनलाइन आपका आ गया क्लाइंट हूँ, मैंने आपको 11 बजे पैसे दिए, जी, तो 11 बजे आप एक मिनट, लेजर में तो अच्छा, आई थिंक देयर सम बैकग्राउंड नॉइज फ्रॉम वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। मैं म्यूट कर। हाँ, सो सपोज मैं आपका क्लाइंट हूँ, आपको दोपहर में अचानक दोपहर में मैंने आपको 1 लाख रुपए ट्रांसफर किया, आप मुझे सौदा करने दे रहे हो, तो आपको 1 लाख रुपए मुझे एलोकेट करना है, शाम तक कर देना, इसमें प्रॉब्लम क्या लगता है? ओके ओके हाँ, ठीक और है यदि सर, आपने एबीसी नहीं भी किया तो प्रो के पैसे पड़ोगे, उसमें से अलॉट कर दो, तो अपने आप सब एडजस्ट हो जाएगा। जी चलिए सर, थैंक यू। Okay, Rahul ji. Yeah, hi. I'm Hello. using ICCL as my clearing corporation. Yes, भैया। दो तीन क्वेश्चंस है। एक तो अपने लोग का जो प्रो का कैश और सिक्योरिटीज जो प्लेज किया हुआ है, सिक्योरिटीज फ्रॉम द प्रो बुक, ओके, इसका अपने को टोटल वैल्यूएशन गिनकर कैश प्लस सिक्योरिटीज का वो वाला फंड्स कैलकुलेट करके डीएलोकेट करके क्लाइंट को एलोकेशन करने का, कि सिर्फ कैश का वैल्यू को डीएलोकेट करके क्लाइंट को एलोकेशन दे सकते हैं? आप अपने सिक्योरिटीज को क्लाइंट को एलोकेट नहीं कर सकते, आई थिंक नहीं कर सकते, ओनली कैश। बट रोहना, कैन यू रिकन्फर्म दैट? Yes, Uttam, you're right. Securities cannot be reallocated. Okay, understood. Now, after payout, will exchanges release allocated amount, or else we have to do the reallocation? Exchange will not release any allocation. Any मतलब allocation. exchange नहीं, call it CC. Okay, sorry, CC, right. आपने That- see, some people were under impression, which was my first slide, कि आपने मंडे मॉर्निंग एलोकेट किया, ट्यूसडे Right. मॉर्निंग सब क्लीन है, मुझे नया एलोकेशन करना है। Yes, The allocation will be carried forward till Wednesday, till the payout. till forever. Okay, it is आपने जो infinite. सपोज मैं अपने क्लाइंट को, मैंने लाख रुपए का चेक दिया, मंडे को आपने एलोकेट कर दिया, और मैंने मंडे को माल ले लिया, वेडनेसडे को लेजिस्ट हो गया, तो वेडनेसडे को मेरे नाम का फाइल लोड करके उत्तम जीरो करना पड़ेगा आपको, Okay, वरना manually. उत्तम मैनुअली सॉफ्टवेयर करेगा आपका बैक हाँ, ऑफिस, बट right. वरना जीरो इज फॉरएवर। Okay, infinite हो जाएगा। हाँ, Right. Okay. सॉरी 1 लाख understood. इज फॉरएवर, मेरी गलती। 1 lakh is forever. Okay. टिल यू मेक Now- इट जीरो इट इज फॉरएवर। तो उसमें क्या होगा, Okay. यदि आप भूल गए, ऐसे 100-200 क्लाइंट हो गए, अच्छा आपके पैसे खत्म, अरे क्या हो गया, समझ में नहीं आएगा। सही इनफैक्ट आई बात नो आईसीसीएल के क्लास ई के अंदर, क्लास ईजी के अंदर एक रिपोर्ट है, चौथा या पांचवा रिपोर्ट, वो डाउनलोड Okay. करोगे तो किस क्लाइंट को आपने कितना एलोकेट कर रखा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लाइव, आपको हाँ, दिखता है। राइट, वो दिखता है, तो रिपोर्ट उससे के अंदर में आता है। हाँ, उससे लुकअप मार के रिवर्स कैलकुलेट कर सकते हो, यदि सॉफ्टवेयर इंपोर्ट करे तो नथिंग लाइक इट। Right, understood. Now the third question that I have is, there are some room for resubmission. Now, yeah, there should be some room for resubmission, because end of the day के अंदर में if there is any kind of short file which is coming in, right? Can't the CCs give us 1 day or 2 day more for? राहुल भाई, इसका थियरी समझ, एलोकेशन इज सपोज्ड टू बी डन फर्स्ट। आप Right. समझिए, एलोकेशन मतलब जैसे कोई क्लाइंट आया, हाँ, आप बोला मुझे लाख रुपए का सौदा करना है, right, रुक, पहले मैं एलोकेशन करूंगा, फिर फ्रंट एंड में लिमिट दूंगा, फिर कुछ सौदा कर, right, ठीक है, और 6 महीने बाद तो यही चलेगा। right, तो खाली ये yes, बोलते हैं कि अभी तुम नया सिस्टम है, ऐसा करते हैं, शाम तक तो ठीक कर देना, मैं तुझे पेनल्टी नहीं लगाऊंगा। दैट okay, डजंट मीन शाम तक करने का आपको पावर मिला है। right, next day पे नहीं करने का पावर है। मतलब शाम तक, मतलब दे आर ट्रीटिंग इट विद लिटिल सॉफ्ट, Right. बट हम बोले नहीं, हमको आज जो काम मुझे आज सुबह करना था, शाम हाँ, तक का जो एक्स्ट्रा टाइम दिया हुआ था, नहीं मैं अगले हाँ, दिन करूंगा बैक डेट में, वो पॉसिबल ही नहीं, सिस्टम के डिजाइन नहीं, में नहीं बैठता वो। समझ गया, हाँ मतलब भाई, that day is that day. हाँ And इट्स इसका नॉट पॉसिबल है। हाँ एंड इसका क्या पेनल्टी क्लॉजेस वगैरह रहेंगे? एंड ये अपने को एवरीडे के अंदर में पेनल्टी का फाइल आएगा, कि एक साथ में मंथ के नहीं, अंदर में क्लियरिंग? एवरीडे पेनल्टी फाइल आ रहा है, सब सीसी दे रहे हैं।
ओके सब सीसी से आ रहा है, ओके ठीक है। CC एंड के द secular भी आया है। Uttam, I'd like to correct you for ICCL. For ICCL, we will be providing the penalty file in some time. We are But you working already on it. provided 2 penalty files. The short No. the short margin file. Sorry. हाँ The short margin Allocation file file has been. No, Yeah. sorry. I'll rephrase. The penalty file, the shortage file is being downloaded, right? The shortage file is being downloaded, Not the but the penalty. penalty file Yeah. So will, sorry. will come For in the us, future. for us brokers, वो penalty file ही है. ये short गया तो penalty आएगा. Sorry, दोबारा. And it is 1% of the margin, short margin amount, or else It is same वो MG30, MG13 में जो shortage होता है ना वो वाला retail okay का. वैसा. Now the response file does तो not उसके have the sorry हाँ बोलिए. yeah sorry you were saying something. नहीं आप बोलिए. The response file does not have the headers. I would request clearing corporation to put in the headers ताकि अपने लोगों का लाइफ थोड़ा सा easy रहेगा to understand कि किधर में allocation ज्यादा हुआ है, किधर में कमती हुआ है, किधर में shortage हुआ है, so that you know we can resubmit the file on response file for allocation. Yeah. See, जो response file आता है ना ICCL. When we load the allocation, we like client A को इतना दो, B को इतना दो, C को इतना दो. We load the file. The response आता है कि record number 4 fail हो गया. उसमें header चाहिए आपको. Yeah. ऊपर में जो header आएगा ना, जैसे clearing number आ गया, date आ गया, फिर allocated amount आ गया, shortage amount के अंदर में जो अपना last वाला K वाला column है. Shortage आप कौन सी फाइल की बात कर रहे हो? रिस्पांस अपने फाइल. को रिस्पांस ये जो रिस्पांस फाइल फ्रॉम द एक्सचेंज व्हिच कम्स इन, जो ये एलोकेशन रात को 11 बजे जो आ रही है ना अभी फाइल, द लास्ट You're talking about the short file. द शॉर्ट फाइल. हाँ, so that's not response file, but yeah, ये जो अभी नया फाइल शुरू हुआ वही ना. उसके अंदर हेडर आया तो मजा आ जाए. सर ही इज टॉकिंग अबाउट द शॉर्टेज फाइल. तो उसके लिए सर हम लोग ने सर्कुलर निकाला है 29 जुलाई 2020. It is suggestion गौरव भाई. Header डालो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात. Yeah, absolutely. मतलब this will make the life easy. कि देखकर पता चल जाएगा कि इधर में है ना ये क्लाइंट का शॉर्टेज हुआ. इनफैक्ट हर ऑफिस में यार ये फाइल है, इसमें कुछ अरे क्या देखो, सर्कुलर खोलो, उसमें कॉलम नंबर 11 देखो. हाँ, अब यदि आपने उसी के अंदर डाल दिया होता हेडर तो अच्छा इसका मतलब ये है. हाँ, ये शॉर्ट. Okay. Just a practical real life thingy or this thing. Okay. बस absolutely that will make the life a bit easy. Okay. And on the sale transaction अभी तो basically लास्ट वाला कॉलम देखना सब जीरो है ना. Yeah, सब जीरो है बस. Right, agreed. Now on the sale transaction, if we are doing an early paying of securities, then also we need to, and there is no buying in that account on then that you don't need to allocate because early paying हो गया, end of day margin zero हो जाएगा. Zero के साथ में zero, no difficulty for 6 months. Now only for 6 months. Now after 6 months we'll have to do the allocation. सर 4 महीने बाद वेबिनार करेंगे उसके ऊपर. Okay. And suppose ये क्लाइंट ने माल बेचा मंडे को, एंड ऑफ द डे के अंदर में अर्ली पेइंग कर दिया, ट्यूसडे को माल ले रहा है तो उसको 80% का बेनिफिट मिलेगा. वही ट्यूसडे आपको 100% बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आपको मैन्युअली देना पड़ेगा. ऑटोमेटिकली वापस मिलेगा. Okay, we have to allocate to the client. That was my slide number 2 or 3. Understood. My queries are sorted out here. Yes, all right. Thanks. Yes, next please. Yes, Hemang bhai. Hemang bhai Ladani. Hemang bhai. Yes, partial query has been already answered. Okay. So we have both. नहीं, अब CC का नाम बता दीजिए तो आसान हो जाता है. Yes, I am coming to that. We have both CC, Okay. ICCL as well as NCL. NCL is F&O through the CM. समझ गया. So ICCL, you responded that we can get the latest allocation file from this class. I want to know about the NCL. How will get the latest allocation file? NCL से कोई है नहीं, but can Kishore ji any is there any particular report we can download? ये किसको कितना allocate किया हुआ है? इतना सारा. It is available on NMAS. Okay. In the menu, collateral management, and then collateral information. There is a download option. Client wise case allocation. ठीक है. Hemang bhai, I think that solves it. And through the, even though we are a member of NCL through the CM, so that file is also available to TM. वो पता नहीं है, वो देखना पड़ेगा. Yeah, I think it should be available. Yes. अच्छा, TM को ही मिल जाएगा. Okay. And Uttam ji, for ICCL, you have told about the on the class
which menu, if you can? Class member reports में client allocation report. Rohana, that's right? Yeah. Client allocation details. Client Yeah. allocation details. उसमें मिल जाएगा. Okay, thank you. ये ऐसे actually कई members की छोटी-छोटी queries है. ये report कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलता है. Okay, ठीक है, मैं ले लूँगा. You know, stuff like that happens. Oppo Reno 7 5G, please. Somebody has not put his name and come from his Oppo phone. Ram Avtar ji, your question, please. उत्तम जी, हुकुम. बेसिकली इसके लिए ये है, कोई T2T में रिलेटेड है कि मेरा जितना फंड पड़ा एक्सचेंज में, मेरा क्लियरिंग एनसीएल कॉर्पोरेशन है, उससे ज्यादा किसी दिन पे इन हुआ और मैंने अर्ली पे इन कर दिया क्लाइंट का. Early paying of funds. यस, तो उसमें क्या एलोकेशन में कैसे करूंगा? T2T में 100% मार्जिन लगता है. तो आप ये कह रहे हैं कि आपके क्लाइंट ने ₹1,00,000 का माल लिया. यस. T2T का माल लिया. यस. तो इस आपने 20,000 रुपए तो एलोकेट किया हुआ था. यस. कम से कम. या. फिर आपने उसका अर्ली पेइंग कर दिया. यस. तो अर्ली पेइंग करते तो उसका मार्जिन ड्रॉप हो जाता है. हाँ, लेकिन वो एक्सचेंज में नहीं शो करते ना. सीसी में मार्जिन ड्रॉप नहीं होता. नहीं, अलग तरह से. उत्तम, जैसे एनसीएल में मेरा समझिए 1 करोड़ का टोटल है फंड, ठीक है. मैंने 1 करोड़ का ही उस दिन में समझे सिक्योरिटी परचेज किया, तो 100% मार्जिन है. क्लाइंट ने अर्ली पेन कर दिया और मैंने अर्ली पेन में फंड भी कर दिया. तो आपका मार्जिन सी अर्ली पेन ऑफ फंड बहुत कम लोग कर रहे हैं, तो ये थोड़ा ऑकवर्ड है. और थोड़ा एनसीएल वाला कोई है नहीं तो स्पेसिफिक जवाब नहीं सकता. बट किशोर जी, इफ यू कुड हेल्प. अर्ली पेइंग ऑफ फंड्स करते समय आप क्लाइंट वाइज बाइफरकेशन वाला फाइल के साथ करते हो तो वो क्लाइंट का मार्जिन ड्रॉप हो जाएगा. नहीं, वो शायद बेनिफिट देते नहीं है. मार्जिन का ड्रॉप अगर मैं क्लाइंट करता हूँ, बेसिकली जो फंड है ना, वो उसमें बता एलोकेशन को पे इन पे आउट से कोई लेना देना नहीं. ये क्रोनिक प्रॉब्लम है डाउनवर्ड एलोकेशन का. सिर्फ ये रीजन नहीं है, इससे बहुत सारे रीजन है जो डाउनवर्ड एलोकेशन होना चाहिए लेकिन वो अलाउ नहीं कर रहा है. यस, के ऊपर डिमांड सब लोग कर रहे हैं कि वो अलाउ. आई थिंक आईसीसीएल कर रहा है. उत्तम जी, हाँ जी, आईसीसीएल ने यदि आपका मार्जिन यूज है तो भी आपको डाउनलोड एलोकेशन आईसीसीएल अब करने दे रहा है फ्रॉम मंडे. I think NCL, see, because the development changes, probably other corporations, clean corporations, are work in progress. But रावता जी, आपका जो क्वेरी आप सेटलमेंट में पहुंच गए. सेटलमेंट से कोई ताल्लुकात नहीं एलोकेशन का फिलहाल. नहीं, एलोकेशन में कितना सी एक्सचेंज के रिकॉर्ड में कितना मार्जिन ड्यू है. यस, उतना आपने एलोकेट किया हुआ है, काम खत्म. यदि आपने अर्ली पेन फंड्स कर दिया, ब्रेकअप कर दिया, एक्सचेंज के रिकॉर्ड में मार्जिन ड्यू गायब हो जाएगा. यस, तो आपने कुछ एलोकेट किया नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता. जीरो के सामने जीरो. ठीक है. अच्छा, वन मोर थिंग, ये जैसे मैंने क्लाइंट को एलोकेट कर दिया, आपने जैसे बोला एंड ऑफ द डे उसको जीरो करना पड़ता है, ठीक है. नहीं, एंड ऑफ द डे नहीं, जब उसका जब भी जीरो हो जाए तब जीरो कर देना, राइट. हाँ. अगर नहीं करे तो कोई इशू नहीं है ना. बिल्कुल इशू है. आप गलत रिपोर्ट कर रहे हो. आप उस क्लाइंट का मार्जिन दिखा रहे हो जो क्लाइंट आपने दिया ही नहीं आपको. यस, वो प्रो से अगर हम लोग करते तो अरे सेबी सर्कुलर में एक पैराग्राफ 11 है, पैराग्राफ 16 है. पैराग्राफ 11 कहता है कि आज जितना क्लाइंट का जमा है उतना मिनिमम आपको एलोकेट करना है. और 16 बोलता है कि 11 ही बोलता है कि आप जितना क्लाइंट का जमा उससे ज्यादा उसको एलोकेट नहीं कर सकते. ओके, आप सेबी के सर्कुलर का उल्लंघन कर रहे हैं. यस, वो क्लियर है. मतलब ज्यादा एलोकेट नहीं करना. ज्यादा भी नहीं कर सकते और जितना सेग्रीगेशन फॉर्म में दिखा रखा है उससे कम भी नहीं कर सकते. मतलब ऐसा नहीं कि ये क्लाइंट सौदा नहीं कर रहा है, इसका 2 करोड़ रुपए जमा है, इसको जीरो एलोकेट करके पूरा प्रो में डाल दो. आप नहीं कर सकते दोस्त. हम नहीं कर सकते ये काम. अच्छा उत्तम जी, किशोर जी. अच्छा, तोष्णीवाल जी को पैनलिस्ट अपग्रेड कर दीजिए ना, आधे सवाल तो वही जवाब देंगे. हाँ तोष्णीवाल जी को. अच्छा, एक चीज पूछना था, शायद मे बी एज अ पोल. हाँ बोलिए ना. तोष्णीवाल जी आप म्यूट हो गए. एनीवेज, तोष्णीवाल जी, हाय. मैंने एक्चुअली सोचा था कि ये वेबिनार था 10 मिनट खत्म हो जाएगा, कि सबके सवाल सब कुछ सिंपल हो गया. एनीवेज, प्लीज कंटिन्यू. अच्छा उत्तम जी, हेलो किशोर जी. अच्छा, ये जो डाउनवर्ड एलोकेशन में जो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो एक ऐसा सजेशन आया है कि
Are member okay if the downward allocation allowed even if there is a margin obligation? अगर member चढ़ा रहा है downward allocation, then member should be careful. वो उतना downward allow कर देंगे और उसका obligation है तो भी कर देंगे. It can result into RRM also अगर आपने गलत फाइल चढ़ा दिया तो. नहीं सी केयरफुल तो सभी प्रोसेस में रहना पड़े ऐसा ही है. तो केयरफुल नहीं ये लेकिन मतलब ये होना चाहिए. मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि डाउनलोड होना चाहिए. We have to ask many member because ये बहुत critical चीज है. देखो एक तोष्णीवाल जी अब मेंबर से पूछ लेंगे. आई थिंक विल डू गूगल ग्रुप में मेल डाल देंगे, उसमें एक गूगल फॉर्म डाल देंगे. दैट्स द राइट प्लेस टू आस्क. बट एक चीज मैं बताऊं, 1 cc एटलीस्ट आई नो has already permitted downward allocation in spite of margin being there. ठीक है. The other CC has not done it yet. Okay, maybe to save the members. But if we want a poll, we'll put a Google form and take a. मैं तो क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी था तो मैं पूछना चाह रहा था. मतलब they have a provision. ठीक. तो make the downward allocation much faster. जो भी अभी अगला आदमी जो भी क्वेश्चन रेज जाएगा, पहले इस सवाल का जवाब दोगे, उसके बाद अपना सवाल रेज करोगे, तो अपना सीधा 15-20 जन का पोल हो जाएगा. तोष्णीवाल जी चलो क्या कहते हैं? ओके, अब आप यही रहिए, आप हमारे पैनलिस्ट बन गए. Rajesh ji, your question please. Harsh ji, your question. Good evening Uttam ji. My clearing operation. हाँ, पहले ही बताइए, मार्जिन ड्यू है तब भी डाउनवर्ड एलोकेशन अलाउ होना चाहिए कि नहीं? If no, I mean it's okay with us for anything. ठीक है, आगे बढ़िए. So my clearing corporation is NCL. Now my question operationally which I faced is yesterday my client did sold some shares from DP and we till the last file we could not do EPI. So hello. So in cash segment, I have a reason to update it, but based on the limit which I've given in derivative segment, the circular does not permit that particular option is not available. हरीश भाई आपका actually sorry क्षमा कीजिएगा, समझ नहीं पाया आपका. So for example, I'll give an example. 10 lakh rupees stock has been sold in cash segment from. और early payment करना रह गया. Suppose. रह गया. For whatever reason रह गया. हाँ. Yeah. So based on that, 8 lakh rupees exposure I can give in derivative segment. No, you can't. Okay, so you can't do it. आपका इनफैक्ट MG13 में भी शॉर्ट जाएगा. If I've done an early payment, then you have not done it. सब आपका क्लाइंट ने 10 लाख का माल बेचा, 2 लाख आपको मार्जिन लेना था. Yes. उस क्लाइंट ने आपके पूल में ट्रांसफर कर दिया. I hope. Yeah. लेकिन आप आगे पे नहीं कर पाए. So though for the sale side margin you can show as collected. Yes. As per the exchange FAQ. Yes. But you cannot give further exposure against that. That's the existing law. यदि आप कर रहे हो तो गलत कर. Okay. All right. Thank you. Sorry, Ashwin, you did not give the answer you want to hear, but that's the law. Siddhant ji, your question, please. Siddhant ji, your question. Siddhant, Pragya ji, your question, please. Pragya ji, your question. Yeah. Sorry. Uttam, I have this question related to the previous EPI question. If I have done the EPI, but for some reason I could not successfully upload the EPI file. So by that logic, you have done EPI but not uploaded the file. What does the statement I have done in the depository system. It has reached CC, but the EPI file which I am supposed to inform the CC कि भाई मैंने ये इसके दिया है, it has not been. I understand NCL is allowing this kind of a situation to be reported in the end of day that EPI was done. Okay. So for actually, example, reporting cutoff is 8 p.m. But it is possible at 9 p.m. I might have completed, and by 8 p.m. I might not have done this, and therefore I have not done allocation on the hope I'll do. I managed to match in depository at 9 p.m. But thereafter I cannot upload this EPI file to the CC. Actually, unfortunately, NCL is not here. They can't answer the question. But Uttam ji, no other CC has given that option, so even they can't respond to it. Uttam ji, in case of CDSL, they are sending the EPI request.
नहीं पॉइंट इज वीरेंद्र भाई के 2 पॉइंट्स हैं. ओके, एक पॉइंट ये है कि मैंने अर्ली पेन कर दिया, इट इज सक्सेसफुली एक्सेप्टेड बाय सीसी, लेकिन नहीं बाकियों के लिए बोला, क्लाइंट का ब्रेकअप देना रह गया तो उसका मार्जिन ड्रॉप नहीं हुआ. करेक्ट. तो इस केस में और मैंने एलोकेट नहीं किया और मुझे पेनल्टी लगी, चल लग गई पेनल्टी. अब मेरे पास T+4 में ऑप्शन है EPI वाला. क्या ये मैं उस EPI में डाल के माफी मांग सकता हूँ, माफी ले सकता हूँ क्या? दैट इज अ क्वेश्चन. करेक्ट. सो in fact there's only one question to part A part B. इसमें सेल साइड का मार्जिन तो डेफिनेटली अलाउड है ही. हाँ, वो तो श्योरली अलाउड है. नहीं, बट वो अलोकेशन नहीं किया तो उसका शॉर्टफॉल का क्या होगा? उसका अलोकेशन अलग चीज है. दूसरा जो 80% का इश्यू है दूसरे मार्जिन के वैल्यू के लिए, जहाँ तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, लेटर्स ऑफ द FAQ says that if the shares are reached to the successful EPI, the word is successful EPI. Yeah, successful paying हो गया है. So you can do further exposure. It is a successful EPI. अभी तो I don't want to complicate life and say कि मेरा buy का 80% की बात करो, अभी तो सिर्फ सेल की बात करो. मैंने सेल का तो हो ही रहा है, सेल का तो 100% श्योर है. But CC should give me exemption. No, it should allow me a reason code. Why ICCL is not allowing a reason code? Yeah, so Rohana, I'll take this point with you. So the ICCL gave 3 reason codes and you have given 2. And the third reason code difference is early paying. Now, again, I believe ICCL also has a similar system. Once I do early paying with ICCL, then I have to give a client-wise breakup. Correct? If I don't, right? Suppose वो client-wise breakup रह गया, वो successful early paying है, तो मेरा वो जो sale side का margin drop नहीं हुआ client code का, एक बार आप penalty लगा दोगे. And you have not given, and I have no way of informing you through a system कि boss यार मैं इसका early paying कर चुका हूँ, please क्षमा करो. तो ये और in fact NCL is not there, so we really don't know what that early paying वो जो है third point जो उन्होंने डाला है और आपने नहीं डाला, वो उसका तात्पर्य क्या है? So I don't know how can this discussion move forward, Virendra bhai. Rona, any general thoughts? What I'll say is that in this particular case, let me take this under review, okay? And I'll give you an update in some time. Let me see whether we can add something on this line. Let me just see the compliance requirements in this regard. So the point is precisely because depository is open till 9 and you are accepting the files till 8 p.m. So I am very much within my rights to do a EPI at 8:30, for example, and then upload the file. But because you will not take that file, I am going to be penalized for short allocation for no fault of mine. No, sir. I would like to correct you on that point. Whatever EPI is done till end of day on trade date, all of that will be considered in your allocation file, provided the EPI is a successful EPI. That is, the full EPI transaction has been completed. In the case that you mentioned, you're basically saying that half has got completed and half has not been completed. So I need to check the compliance requirements in this particular case. I will get back to and keep in mind the fact that otherwise, in the present scenario, we are not penalized if we have completed the leg till the CC. If the securities have moved to CC, we don't get benefit unless we upload the CC file to the CC. But for purposes of penalty, we are not penalized in such cases. Okay, let me just check on this, sir, and I'll get back to you on this point. Appreciate that. So exception list में ये होना itself यही केस के लिए है. इसके अलावा तो EPI ऑटोमेटिक निकल ही जाता है. तो exception list में EPI का कुछ मतलब ही नहीं है. I also believe, Kishore bhai, what you are saying, that is the intention of what NCL is. Let Rohana check with her compliance and then let her get back to us. We have conveyed our point. Yes. And Virendra bhai, please stay now. Can Virendra bhai be converted to panelist? Yes, next point. Virendra bhai, the further points. Since MCX and NCDEX clearing corporations are also available on the call, by when they will allow us to, have similar reason codes file being up. So I reached out to MCX and said that they're not, till yesterday evening, they're not decided kya kar rahe, whether they'll give a T+4 reason code. But Bhavna, you are here. Can you throw light on this, or you can get back? You can say I'll get back later. It's perfectly all right.
But Yeah, so for as of now, the reason codes which is excess collateral is not here in NCCL. So we are looking into this and we will get back to you whether this can be incorporated or not, and if incorporated, till what time it can be done. so, Bhavna, again, there are two questions. I'll break it up and I'll answer it on your behalf. Number one, whether or not NCDEX CL will permit this The excess collateral. another Yeah. CC not, is a decision still to be taken. If the decision taken is yes, then you will then inform us what is the manner Correct. in which we can upload. Correct. ये So दो part. right now we haven't decided whether this excess So collateral. please, is other- please take it as a request from the association that इसको consider कीजिए. Please follow the best practices followed by other CCs, and it's a genuine matter for a kind Yes. consideration, The please. problem here है ना, we do not know how much the surplus at other CC at the time at which you are closing reporting, because MCX, for example, closes at 1:30 AM. At that time, we have information from F&O how much is surplus. But when you are closing the submission timeline, we actually don't have the numbers only of how much margin is being put in F&O. Yeah, sir. Sir, for that, tentative margins could be taken. But yes, this excess collateral, we will let you know whether it can be incorporated until at what time, until when, how can we give. Okay. Thank you. Thank you. Now, I think we are going to harass you a bit more. Has somebody joined from M6 clearing? So they are trying to join. Yes. अच्छा, there's some, Yes. जैसे join करेंगे, please just flag it so we can Sure. re-raise the question there. Kalpesh ji, your question. One second. Yes, sorry. One last question left. One last question left. It is a very tricky one. What happens if I have received, client has given me information that, okay, I have deposited X check, but I don't want to allocate till I am sure I have received the money. And if the bank transaction is reflected at 9 PM in my account, can I have some carve out for that? No. How can? What carve out do you want? I want a carve out to be able to, inform the CC that this balance was available by virtue of the check. But Virendra, this is conceptually a problem, right? Because you allowed him to trade. So without receiving margin, you allowed him to trade. That's your problem. But if you have not allowed him to trade, then there's no problem. So we cannot say कि boss उसका check आया लेकिन मैं उसको allocate नहीं किया लेकिन सौदा करने दिया. Problem कहाँ से आ रही है? End of day margin in the last span file goes up. Intraday तो you are asking me to collect as per previous day I have collected. Okay. शाम को मैंने उसको margin call दे दी 4 साढ़े 4 बजे. Correct. Okay. So adjust करूँ. Okay, so this probably has to be another reason code, permitted reason code, that checks payment received because of enhanced margin due to end of day increase in span or whatever it was. Yes, something of that sort. And post received before received later in the day. Correct. We'll take this up. So this is one more reason code. Yeah, thanks. Thanks. Kalpesh ji, your question, please. Karan ji, your question. Yeah, hi Uttam ji. The thing is that I can thank you for the lovely mails you put on the Google Doc. Really appreciate. See, point is, if all of us start sharing our experiences, बहुत सी गलती हो सकती है, ध्यान रखना. कितना I was supposed to send you a mail 1-to-1, but I would like to thank you for. World is about giving back, no? Yeah, seriously. If we all give up, we all are richer. Yeah. Especially knowledge and gyan and experiences to ही. Anyway, sir. So the minimum allocation that needs to be done needs to be according to segregation, and we have read all that minimum maximum funda. But the segregation way it's happening before we all actually implemented allocation properly was that segregation. In segregation, there's a column called cash plays with CC. So that cash plays with CC column, the client-wise breakup, actually they are doing random allocations as yes. It's not. So client level pay, it is not possible to match is what the vendors are also trying to figure out, unless they, I recommended that they take the client allocation file and try to make that the base. Make that the base. But is that compliance wise okay if on a gross level across all the minimum allocation matches, but client wise it is not? So I think this question has not been put up to the authorities yet. They have not yet applied their mind. So, but Karan, my guess is again as a participant,
मुझे तो लगता है total level में भी some members are going to go for client code wise तो दूर की बात. So friends, please hear this carefully. This is going to have serious compliance implications for all of us going ahead. Current head. So please, I'll tell you the concept again. It'll take a couple of minutes. In our, let's assume a self-claim member cases, we said कि receive from in the segregation 5, receive from client 100 रुपया, retained by me 30 रुपया, deposit with CC 70 रुपया. ऐसे करके सारे क्लाइंटों का टोटल है. तो बेसिकली टोटल रिसीव फ्रॉम क्लाइंट्स इज से 10 crores, retained is total of all the clients 3 crores and placed with CC 7 crores. Now this is a segregation file and this allocation 3 crores and 7 crores is random. कहीं में कहीं fit हो जाता है, ठीक है. Randomly there's some logic but we don't know the logic. Now when you come to allocation, now clientों को पैसे allocate किए. If the total allocation to all the clients is more than 7 crores, ठीक है, it seems okay. But total allocation client is less than 6 crores, then we have a serious problem because यहाँ हमने बोला है कि client को 7 crores of client is lying with CC, but CC के records में allocation में दिख रहा नहीं है. So we have problem. Now this is at a total level. वो तो फिर भी धक्का मार के मैच कर लेंगे. Then at client code level. Now client A001 का retain था लेकिन A002 का place with CC में चला गया. But ऊपर हमने A001 को allot किया, A002 को allot नहीं किया या कम allot किया. So if you go client wise, there could be again be a mismatch. And the solution is of course take the allocation file of Monday and जब Tuesday को Monday का file बनाए segregation का तो उसको base लेके कुछ algorithm run करके करें. वो तो जब वो implement होने में किसी भी software को logic बनाने में time लग जाएगा because this issue was probably missed by many of us. But Rohana, have I confused you? Actually, I raised this with Rohana yesterday on call. अच्छा. So I think, but still, it was not clarified if it is gross. Rohana, is the issue understood by you? What we're trying to say? Yes, I've understood the issue, but you'll have to give us some time. Yes, we are yes. still Yes. So please, figuring out what all validation we're putting in place. So at least total तक ठीक है. अब client wise जाओगे तो we may be a little off. We'll try. See, this is now current by and rest of the team. This is not an excuse. क्या तो हमारा software बना नहीं है इसलिए हम कुछ भी load करेंगे. That can work as a transitionary measure. But we'll all have to find a way to make it tally. Yeah. So basically, the goal is: do we have to make it tally client wise, or is it not required? If you ask any regulator this question, they'll say client wise. Right. That is, they'll take the strictest interpretation. This question would have only one answer, right? So right now, for now, we have to attempt to move towards client wise. Yeah, we it's logical. See, all these allocations, segregations, they also, as Virendra Bhai keeps on pointing out, keep boss, you're forgetting there's a default possibility. You know, there could be a crazy event, there could be a moonfall, the comet hitting the earth or something. So उस वक्त ये सब होगा. And yeah, some big CM going bust, some big TM going bust, or some crazy stuff happening. All this allocation and segregation, that's the kind of money which will move to another CM who solve it. So these numbers are very critical from client asset protection point of view and getting them sanity in the market in case of an extreme situation. So these numbers cannot be treated lightly. It's based on client allocation report, we'll have to ask the vendors to. We'll have to find a way to get the algorithm in. Okay. Right. Thanks. Thank you. But kind of a very good point as usual. Pradeep ji, your question, please. Sir, Mr. Gitesh has joined from MCX CL. Gitesh bhai. Yes, sir. Hi, sir. Good evening. So so there were some questions जो pending रह गया था on this assets, client collateral, or client allocation available with other CC, which ICCL and NCL have given a T+4 option, and NCDEX says we are kind of considering कि ये option दे सकते कि नहीं दे सकते. Has MCXCL made up its mind? Because I know I got a message from your team that we are considering it, but have you taken any decision will accept it, reject it, or still under consideration? It's still under consideration. So fully by tomorrow, we should be able to have a decision on it probably.
And because the first due date for levy of penalty for 1st August is supposed to be 8th of August, taking the T+5 due date as the consideration. So we are trying to have some conclusion on it before the cutoff date. Really appreciate that, Riteshi. But again, on behalf of the Brokers Forum, I would like to formally request you again, please consider it favorably, please, and in line with the industry best practices followed by other clearing corporations. Sure, sir. Thank you. Virendra, any point to add on this? I think you summed it well. I mean, this is what we are saying, that if other CCs are following, this is a best practice which is worth emulating for even MCX and NCDEX. And we just hope that you'll be able to do it as fast as the 4 days deadline which we have assigned. Pradeep ji, your question, please. सर मैंने एक क्लाइंट को बीओडी में 4 लाख रुपए लोड किए थे और उसने 2,70,000 रुपए मार्जिन यूज किया है, तो मैं उसको यूओडी पे 270 पे डाउन कर रहा हूँ तो वो नहीं होता। उसमें क्या होता है, अब जैसे सपोज उसने, इस एग्जाम्पल को सिंपल करते हैं, आपने क्लाइंट को 10 लाख एलोकेट किया, उसने 2 लाख का मार्जिन यूज हुआ सपोज, ठीक है, तो 8 लाख फ्री है, तो आप बोल रहे हो मैं 10 को 2 क्यों नहीं कर सकता, राइट प्रदीप जी? हाँ जी। हाँ, तो अब सब आप देखते हो कौन सा आइटम में काम किया, उसने रिलायंस में काम किया ना तब कर सकोगे, बट उसने कोई ट्रेड टू ट्रेड के आइटम में किया तब नहीं कर सकोगे। आप एनसीएल में होंगे, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। एनसीएल में ही? हाँ, तो एनसीएल ने क्या कर रखा है, ये अपने सेफ्टी के लिए कर रखा है उन्होंने, जो उनकी राय में, कि कोई क्लाइंट ऑलरेडी कोई मार्जिन यूज किया हुआ है तो जितना यूज किया हुआ उसके नीचे जाने नहीं देंगे। मतलब कभी आप सोचिए कोई गलत फाइल लोड होगी 000 करके, तो बड़े पंगे हो जाएंगे। ये उनका नहीं, उससे नीचे तो नहीं जाने देंगे, उतना भी नहीं जाने दे रहे ना सर। नहीं तो सर वो जो आइटम है काम पे उसका मार्जिन ड्यू ज्यादा होगा सर, उसका मार्जिन ड्यू 2 लाख नहीं 3.5 लाख होगा, 4 लाख होगा, कोई 40% वाला आइटम जो फाइल में आया उतना नहीं करने देंगे। नहीं, जिस फाइल में आया कि इसका टोटल मार्जिन कितना है, इस केस में उसका टोटल मार्जिन 2 लाख रुपए लगा है, जैसे 2 लाख लगा है और आपने 270 अलर्ट किया हुआ है। नहीं, मैं 270 लगाया मान लो, तो 270 लगाए तो 270 नहीं करने देंगे सर। 271 तक तो दिक्कत, मतलब 270 प्लस 1 रुपए तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए उसके। नहीं, वो फिर उससे ऊपर लेके जा रहे हैं सर, 10% और ऐड कर रहे हैं उसमें। अच्छा, वो 90% के हिसाब से? हाँ, 90-100 कर रहे हैं वो सर। अच्छा, डिवाइड बाय 1.1 कर रहे हैं, डिवाइड बाय 0.9। यस सर। हाँ, अच्छा, क्लाइंट बोलता मेरा मार्जिन इतना यूज हुआ, बाकी पेमेंट चाहिए। अच्छा, तो उसके अंदर 90% और लगा दिया। हाँ, 90 वाला फार्मूला और लगा दिया और लगा दिया, तो 270 बेसिकली ऑलमोस्ट 3 हो गया। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ठीक है, तो अभी ये कानून है तो है अच्छा वाला, लेकिन हमने पॉइंट आउट कर दिया, मैं मिस कर गया। बट पॉइंट ठीक है सर, थैंक यू अगेन। लेकिन आप अब ये अगेन तुलसीलाल जी का जो सवाल है मैं आपसे पूछता हूँ कि अब उसका 270 है, लेकिन यदि सीसी बोले अच्छा देखो 270 का 2 रुपया भी करना है, मैं तुझे अलाउ करता हूँ, तो क्या सीसी को अलाउ करना चाहिए? आप संभाल नहीं, वो नहीं करना चाहिए सर, क्योंकि 270 करना चाहिए। लेकिन अब 270 फुल रेट करना चाहिए कि 20% के हिसाब से अटकाना चाहिए? कैश मार्केट में 20% होता है, कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है। जो मिनिमम मार्जिन है उतना रख के करना चाहिए सर। ठीक है सर, ओके, पोल ले रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। Urvisi, your question please. गुड इवनिंग उत्तम जी। ऑल सेट सर, आपका तो काम सही चल रहा है। नहीं सर, पिछले 2 दिन में प्रॉब्लम फेस हुए हैं जी, कुछ ऑब्जर्वेशंस है, बताइए। उसमें सर एक क्वेश्चन ये है, हमारा प्रीफर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आईसीसीएल है। क्वेश्चन अपना ये है, क्या तो होता है या नहीं होता, प्रीफर्ड क्या होता है? अब सीसी आईसीसीएल है, चलिए आगे बढ़े। अच्छा, क्वेश्चन ये है उत्तम जी कि से सपोज किसी क्लाइंट ने मॉर्निंग में 10 बजे पोजीशन क्रिएट किया, 100 रुपीज का एक सेल लिया उसने, और कैश मार्केट में, ओके, सिर्फ कैश सेगमेंट है अपना, 100 रुपीज की एक क्वांटिटी बाय की उसने, तो मिनिमम मार्जिन 20% रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका 20 रुपया मुझे एलोकेट करना है। बट सपोज क्लोजिंग प्राइस उसका 120 हो जाता है, तो उसमें भी पीक मार्जिन कितना रहेगा? 120 के ऊपर काउंट करना पड़ेगा या 100 के ऊपर काउंट करना पड़ेगा? मेरे ख्याल से कैश मार्केट में ट्रेडेड वैल्यू पे चल रहा है टोटली। कैन आईसीसीएल कंफर्म?
बिकॉज मैंने ऑब्जर्वेशन देखे हैं. I think Rohana has dropped off. No, I'm Yeah, here. there. She's there. Oh, sorry. Yeah. So Rohana, I mean 20% traded value or closing current market price? It's 20% of traded value. Urvisha sent us the query. We are looking into it. We will get back on that query to you, Urvish. Yes, Rohana, please. Due to that, we have received short allocation file, Rohana. Okay, ठीक है. So hope there will be no penalty in that. ठीक है. Good point, Urvish bhai. Okay, thank you, Uttam ji. Urvish bhai, thanks for. हाँ, tell me. नहीं अच्छा, see, मैं सारे मेंबर से रिक्वेस्ट करता हूँ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया करो, गूगल ग्रुप में शेयर किया करो, बिकॉज मेरे ऑफिस में ये हुआ, मैंने ये गलती की, मैंने ये सीखा. तो क्या है? One more point is that Uttam ji, तोषनीवाल जी का जो point था ना, yesterday what we did, हमने entire सभी क्लाइंट का डीएलोकेट कर दिया था. So ICCL system allowing that. हाँ, ये तो सर. हाँ, सबका मैंने जीरो कर दिया था, फिर फ्रेश एलोकेशन किया. See, point is आप समझिए, हर चीज में कुछ मार्केट पार्टिसिपेंट का ए ओपिनियन होता है, कुछ का बी ओपिनियन होता है. तो बेचारे सीसी भी कंफ्यूज आते हैं, तो मैं मुझसे चाहते क्या हो. तो अब उसमें 80-20 रूल है. मेजॉरिटी लोग बोलते हैं कि नहीं मुझे अलाउ होना चाहिए, तो बोले ठीक है वो कर देते, और मेजॉरिटी बोलते हैं अलाउ नहीं होना चाहिए, नहीं करते. तो पॉइंट इज इट हैज टू बी a large significant section who wants a particular way of doing things. Correct. So I think बहुत जन ICCL पे दाना पानी लेके चढ़ गए, आप अलाउ करो, ठीक है कर देते हैं. NCL पे कई लोगों ने बोला भाई अलाउ मत करो यार, ये गड़बड़ हो जाएगी, तो नहीं किया होगा. So it is based on the जो जिस तरह अपना ऑफिस अपने कस्टमर्स के हिसाब से चलता है, किस सुविधा हो उस हिसाब से चलता है, वैसे क्लेइंग कॉर्पोरेशन से कस्टमर क्लेइंग मेंबर है, तो उनके फीडबैक के हिसाब से वो अपना सिस्टम सुनाते हैं, और दोनों 100% सेम होंगे तो फिर मजा क्या है. अब तो अपना फ्लेवर तो होना चाहिए ना. ठीक है, थैंक यू. Anubhav ji, your question please. Anubhav ji, your question. Hello. So my question is that एक suppose a client है और वो zero cash पर with security काम कर रहा है. Hello. हाँ बिल्कुल बोलिए. जीरो कैश पे विद सिक्योरिटी काम कर रहा है, जो रिस्पेक्टिव सीसी को प्लेज भी है, तो ऐसे में एलोकेशन मुझे क्या देनी होगी? कुछ भी नहीं देनी. ये एक्चुअली कई लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि भैया किसी 100 रुपए के शेयर दिए, कैश नहीं दिए, तो क्या मुझे मेरे 100 रुपए एलोकेट करने नहीं करने? ओके. यदि आप करोगे तो उल्टा आप गलत कर रहे हो, आप नहीं कर सकते. अच्छा, आपको कैश दिया ही नहीं है. अब जब सीसी 50-50 रेशियो मिला रहा है, तो वो ओवरऑल देख रहा है, जितना क्लाइंट, यदि कोई क्लाइंट शॉर्ट है, यदि प्रो के पास कैश पड़ा हुआ है तो लिमिट दे देगा. ओके. अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी को एक्सपोजर मैंने ईपीआई वैल्यूज के अगेंस्ट में प्रोवाइड किया हुआ है, तो क्या मैन्युअली मुझे ईपीआई वैल्यू को एलोकेट करना होगा कैश पोर्शन पे? बिल्कुल करना होगा सर, वरना पेनल्टी लग जाएगी. ओके. और माय थर्ड क्वेश्चन इज दैट कि क्लाइंट सारे क्लाइंट का जो क्रेडिट बैलेंस है मेरा, चाहे वो वर्किंग कर रहे हो और चाहे ना कर रहे हो, मुझे सबको एलोकेट करना है. यदि कर दो तो उससे सुंदर, उससे सही तरीका कुछ भी नहीं. उससे सुंदर तो कोई तरीका नहीं होता, बट यहाँ पे एक्ट ऑफ बैलेंसिंग को परफॉर्म करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर अ ट्रेडिंग मेंबर इन डेरिवेटिव सेगमेंट, क्लियरिंग सेल्फ क्लियरिंग मेंबर इन कैश सेगमेंट. तो मुझे एक एक्ट ऑफ बैलेंसिंग को परफॉर्म करना पड़ेगा फिर उसके लिए कि मेरा कितना क्लाइंट क्रेडिट एकदम स्ट्रिक्टली लीगल जाएगा. तो आप एकदम स्ट्रिक्टली सर्कुलर को इम्प्लीमेंट करें या इंटरप्रेट करें, तो बेसिकली आप सेग्रीगेशन का फाइल अगले दिन बनाते हो. हाँ, सेग्रीगेशन का अगले दिन बनता है. आप बताते हो प्लेस्ड विद सीसी या सीएम में फिगर देते हो. श्योर बिल्कुल बताता वो जो फिगर देते हो उतना तो आपको एलोकेट करना ही पड़ेगा. अच्छा, उतना और जिस सेगमेंट में वो कर रहा है वो तो करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए. मतलब मुझे जो है सारे क्लाइंट का क्रेडिट बैलेंस को रिपोर्ट करना है, इवन इफ यदि नहीं वर्किंग है तो आपको सेग्रीगेशन दिखाना पड़ेगा रिटेन विद टीएम. आप समझिए, आपके सारे क्लाइंट पैसे देते हैं, थोड़े तो अपने बैंक क्लाइंट अकाउंट में पड़ा होता है, पूरा पैसा तो ऊपर जाता है. जितना आपने क्लाइंट अकाउंट में रखा हुआ है उतना आपने एलोकेट नहीं किया, तो सही है, तो गलत नहीं है. अच्छा, जितना क्लाइंट अकाउंट में रखा है उतना नहीं एलोकेट किया तो सही है उतना. करेक्ट. ओके. लेकिन हाँ, लॉजिक मतलब बेसिक प्रिंसिपल ही है. ओके, बेसिक प्रिंसिपल ही है. थैंक यू सर. हाँ जी सर. Rajesh ji, your question please. Yeah, hello. Rajesh ji, बोलिए. Yeah, sir, we are clearing to ICCL. I have a couple of questions like
से फॉर एग्जांपल जो हमने ऑब्जर्वेशन किया कि क्लाइंट का क्रेडिट एलोकेशन हमने राजेश जी आपकी आवाज राजेश जी हेलो आपकी आवाज बहुत गाबल हो रही है. Probably need to move to a different network area or come to another phone or other instrument, please. Hello, now is it okay, sir? Yeah, it's better. It's perfectly all right. Yeah. Hello, we are clearing to ICCL, sir. Sir, no. We have certain observations like yesterday when we uploaded allocation file, in cash segment there was some excess fund available, and in FNO segment there was some short reported. It was showing that short. तो ICCL ऐसा था ना कि दोनों नहीं, अरे ये पेनल्टी फाइल नहीं है, ये शॉर्ट फाइल. अच्छा. अब जब पेनल्टी फाइल कैलकुलेट करेंगे तो एडजस्ट हो जाएगा. अच्छा, एडजस्ट वही रोहाना मैडम वही बोल रही थी, अरे आपको पेनल्टी फाइल भेजी नहीं हमने, कौन सी पेनल्टी. हम बोले ये शॉर्ट वाली फाइल है, खाली बता दी सेकंड में ये शॉर्ट इसमें ये शॉर्ट, बट कहीं और पड़ा तो चल ठीक है बेटा, आज पेनल्टी नहीं लगेगी. तो हमें इसका वापस को रिवाइज फाइल अपलोड करनी पड़ेगी कि हो जाएगा? सर रिवाइज फाइल अपलोड कर ही नहीं सकते एलोकेशन में. एलोकेशन इज बिफोर, इट कैन नॉट बी आफ्टर बाय वेरी डेफिनेशन. ओके सर. सेकंडली ऐसा था सर कि समझो एक क्लाइंट ने 2 लाख रुपए हमें दिया था जो हमने एलोकेट कर दिया. उसने डे 1 एफएनओ पोजीशन ली जिसकी मार्जिन थी 1.95 लाख. नेक्स्ट डे उसने कुछ भी काम नहीं किया पर मार्जिन शूट अप होके 2,05,000 हो गई. तो मेरा वो 5,000 का वो शॉर्टेज गिना जाएगा, कैसे गिना जाएगा सर? बिल्कुल शॉर्ट गिना जाएगा. तो फिर आज के तारीख में एमजीटी में MG13 में भी तो शॉर्ट जाएगा. हाँ, मार्जिन शॉर्ट है पर एलोकेशन में तो सर मतलब हम क्या सीधे पॉइंट है MG13 में 5,000 शॉर्ट दिखाओगे. हाँ, एलोकेशन में 5,000 शॉर्ट होगा. दोनों जगह सेम शॉर्ट होगा, वो नहीं है तो 5,000 में पेनल्टी लगेगी, लेकिन पेनल्टी एक लगेगी, डबल नहीं लगेगी. पेनल्टी आप सॉरी पर क्लाइंट ने समझो नेक्स्ट डे सर पेमेंट दे दिया उस चीज का, तो वो एलोकेशन में एलोकेट कर दो एलोकेट, पेमेंट दे दिया. बट सर ड्यूरिंग द डे मार्जिन इंक्रीज अगर हुआ है, समझो क्लाइंट ने पेमेंट 9 बजे किया या 10 बजे किया. अरे ये इससे ड्यूरिंग द डे मार्जिन इंक्रीज एक पुराना प्रॉब्लम है सब, एलोकेशन से खराब. आज MG13 में भी सेम प्रॉब्लम आता ही ना आपको, MGTM में भी. सर दूसरा जो ईपीआई बेनिफिट है, ये सेम डे तो एक्सचेंज हमको दे रही है बट उसका बेनिफिट नेक्स्ट डे नहीं आईसीएसएल कैलकुलेट कर रही है सर. अरे उसका आपका मार्जिन 0 कर दिया तो कौन सा बेनिफिट चाहिए आपको? यदि आपने आज 100 रुपए का माल बेचा मंडे को अर्ली पेन कर दिया तो उसका मार्जिन हो गया 0. तो ट्यूसडे भी मार्जिन 0 रहेगा, वेडनेसडे मॉर्निंग 2 बजे तक पेन तक भी वैल्यू 0 रहेगा, उसका सेल पे मार्जिन नहीं लगेगा आपको. तो सामने अगर बाय किया क्लाइंट ने तो कैसे करेंगे सर? सर ये मैं तीसरी बार बता रहा हूँ, आप या तो ध्यान नहीं दे रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, या तो आपने प्रेजेंटेशन ध्यान से सुना नहीं. यदि किसी क्लाइंट ने 100 रुपए का माल बेचा, उसका आपने अर्ली पेइंग कर दिया और उसके सामने आप उसको नया पोजीशन लेने दिए, तो जितना नया पोजीशन लेने दिए उसका मार्जिन आपको मैन्युअली एलोकेट करना पड़ेगा. ये करंट सिस्टम है. ये सिस्टम आपको पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन ये सिस्टम है, ये करना पड़ेगा. ओके सर. दूसरा सर मार्जिन ऐसा ऑब्जर्वेशन आया था कि सर हमने आरटीआरएमएस से 4:30 बजे बैकअप लिया और 7 बजे बैकअप लिया, तो दोनों मार्जिन में डिफर होता है सर. 9 बजे होता है मार्जिन तो चेंज होता है ना, वो तो नया स्पैन फाइल नया 8 बजे डेडलाइन के हिसाब से 7:30 बजे एलोकेट कर दिया और फिर अगर 8 साढ़े 8 पे बढ़ जाता है मार्जिन तो उसको कैसे मैनेज करेंगे सर? आप कैश की बात कर रहे हो कि एफओ की? कैश कोई, हाँ कैश फिर कोई भी सर. कैश में फ्लैट 20 है तो उसकी वैल्यू नहीं है, तो टॉपिक क्लोज करें. ओके. एफएनओ खाली एफओ बचा. एफओ में मार्जिन आप कह रहे हैं कि 7:30 बजे के बाद मार्जिन रेट्स चेंज हुए. Rona, when is the last in ICCL, when do you run the file, the last file for the last one file? Gaurav, can you please explain on this point? Gaurav bhai, you are mute. Gaurav? Anyway, I think Gaurav bhai multitasking. As soon as he comes online, we'll just ask a question then. Okay. Yes, because actually Yeah, operations is handled by the Gaurav bhai. Yes sir. Hello. So ये जो RTRMS में मुझे FNO का मार्जिन दिख रहा है. जैसे जैसे नया नया स्पैन फाइल लोड करोगे मार्जिन रेट चेंज होता रहेगा. When is the last file that you load? उसके बाद मार्जिन is kind of stable for the day. For the T5. Yeah. One second, I'm just checking. Our risk team runs that file. अच्छा, अब risk team से पूछ के बता रहे हैं. Yeah, I'm just checking it right away. Perfect. जैसे आप बता दीजिए. Yeah. Any other question? इसका जवाब आ रहा है. ओके सर. लास्ट डे के एनआरए कस्टोडियन का कैसे रिपोर्ट करेंगे सर?
वो दे दिया ना, NRE what custodian, NRI clients and custodian settle clients. कस्टोडियन सेटल तो रात को 0 हो जाता है। ठीक है, NRI clients का सर, NRE का तो बोल दिया ना, 4 दिन बाद बता देना। तो वो जो 4 दिन बाद की फाइल है वो मतलब सेम फाइल अपलोड करनी है क्या उसका? अरे कुछ अपलोड नहीं, उसके अंदर आएगा कि भाई शॉर्टेज रीजन आएगा कि भैया उस पे मुझे पेनल्टी ना लगाओ, कुछ अपलोड नहीं करना। जो एलोकेशन फाइल में अपलोड मत करना कुछ। वो तो कहानी खत्म हो गई 4 दिन पहले। ठीक है, हमें मतलब रीजन का विंडो मिलेगा जहाँ में रीजन डालना है। हाँ जी सर। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी सर। Dharmesh ji, your question, please. Hello. Yes, sir. Suppose we have stock purchase client, and at the end of the after 8 o'clock it is a sale pledge. Against that we can get the margin benefit, na? So in allocation we have not reported that. तो आप ये कह रहे हैं क्लाइंट का मार्जिन ड्यू था, हाँ, उसने 7 के 8 बजे शेयर रिप्लेज किया। नहीं, रिप्लेज पे आउट में शेयर्स उसी टाइम आते हैं, 7-8 बजे 8-9 बजे आते हैं। रिप्लेज किया कि नहीं किया? रिप्लेज भी कर दिया। हाँ, रिप्लेज कर गया, सीसी के पास पहुंच गया। यदि सीसी ने यदि रात तक आपको क्रेडिट दे दिया, हाँ, तो पेनल्टी नहीं लगना चाहिए। एक आप कौन से सीसी में हो? NSE, NCL। हाँ। Can Toshniwal ji, Kishore ji, can you help in this one? कि रिप्लेस का NCL क्रेडिट कितने बजे तक दे देता है? नहीं, वो कोई फिक्स टाइम नहीं है इसका। हाँ। So धर्मेश जी, आप बहुत रिस्क ले रहे हो। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि विदिन कुछ 30-45 मिनट तक मिल जाता है। तो बेसिकली जो भी NCL का डेडलाइन है ना, रिप्लेस शेयर का लिमिट देने का, तब तक आपने माल अंदर घुसा दिया तो ठीक है, रिप्लेस कर दिया, वरना आपका शॉर्ट जाएगा। तो हम लोग रिपोर्ट कर सकते हैं कि भाई ये मैंने शेयर्स ऑलरेडी प्लेस कर दिया है? नहीं, ऐसा रिपोर्ट करने का कोई ऑप्शन किसी सीसी शॉर्ट एलोकेशन फाइल में ऐसा कोई ऑप्शन किसी सीसी ने दिया नहीं। बट ये अच्छा सजेशन मैंने नोट कर लिया, हम बोल देंगे सीसी को भी परमिट रीजन में आप डाल सको तो डाल दीजिए। Sir, Gaurav here. Last time runs by 5:45 to 6 max. FNO. Okay, that you're talking about replace, right? No, Gaurav, we are talking about the span file. FNO last span file runs at 5:45 to 6 max. तो भैया 6 बजे के बाद मार्जिन फिगर चेंज नहीं होगा FNO in one CC. Moving to next question. Amish ji, your question, please. Amish ji. Amish bhai. Amish bhai, your question. Amish bhai की आवाज नहीं आ रही। Moving ahead. Saurabh ji, your question, please. Yeah, Amish, hello? yes, please. Yes. Yeah. So this is Amish Gandhi here from ICSI. Sir, I have a couple of questions. The first question is this: since last couple of days, since last 2 days, when we are uploading the files, allocation files, we are not receiving the response files. So there is. So I was speaking. You're talking about NCL, I suppose. Sorry. Are you talking about NCL? Which claim so we are corporation? talking NCL. So we are now when clearing you upload the file, there are 2 options: intraday and EOD. Correct? Yeah. So we have uploaded at the EOD at around. So if you upload a EOD, then if you upload EOD, you'll get response file at EOD. If you upload intraday, you'll get response file immediately. Correct? Yeah. So we have uploaded it intraday at around. Okay, you uploaded intraday. This you're but talking we have about. not received it. ये Monday की बात करें, Tuesday की Wednesday? No, so we have uploaded this on the 1st of August. We are talking about 1st of August. So 1st August को there was some difficulty. There was some delay because system पे load था. But I don't believe we have heard any major problem on 2nd August. Is that correct, Amish bhai? 2nd August Yes, okay? absolutely. So 1st August में थोड़ी तकलीफें हुई है। तो सर उसके लिए हमें कुछ शॉर्ट एलोकेशंस आई है, हमें पता नहीं चले रिस्पांस फाइल्स के बेसिस पे. So can that will be considered by yes, the we are going to ask, we are going to request the regulators to please consider at least first day, if not the first week. So it will be first day or some more leeway because we will ask. We'll ask for more. But look at this, till the last moment सबको विश्वास था कि 1st August extend होगा नहीं हुआ. Till the last moment सबको विश्वास था 31st July पे इनकम टैक्स रिटर्न एक्सटेंड होगा नहीं होगा. So point is now the regulatory mind seems to be बॉस ये extension देते ही आप लोग सब delay हो जाते हैं.
I understand. और दूसरा जब भी रेगुलेटर से बात करोगे भैया तुमको 3 महीना दिया था, 3 महीने का लाइव सिस्टम दिया, तुमने टेस्टिंग नहीं किया, अभी लास्ट मिनट में तुम हमें जान खा रहे हो, दिस इज नॉट फेयर। तो ये थोड़े हम बैकफुट पे खेल रहे हैं, बट वी विल मेक अ रिक्वेस्ट कि प्लीज Sir, please, yes, I we think will make a request because and actually they'll go by data, how many brokers they affected. If they say कि out of 1000 clearing members 800 clearing members में कोई शॉर्ट है, वो नहीं हो रही, लेकिन उन सबका MG13 MGTM क्लियर है, तो वो I hope that data will convince them कि हम बुरे लोग नहीं हैं, there's a system issue. correct, sir. So I would really appreciate that. Thank you. So my second question, my second question is, sir, that if I enter into as a trading member, if I enter into the custodian trade, so for custodian trade there is no upfront allocation is required. It is exempted, right? Being a custodian See, trade. custodian का दो चीज है, एक तो इंस्टीट्यूशन होता है, एक नॉन इंस्टीट्यूशन कस्टोडियन सेटल होता है। इंस्टीट्यूशन ट्रेड में तो मार्जिन लगता ही नहीं है, करेक्ट, तो खत्म हो गया। उसके बाद जो मार्जिनेबल जो ट्रेड्स हैं उसमें भी यदि एक बार टेकअप कर लिया तो एंड ऑफ डे तक तो मार्जिन उड़ ही जाता है। सो एलोकेशंस में कुछ नहीं आएगा सिंस एंड ऑफ डे में उड़ ही गया ना, तो एंड ऑफ डे कुछ आएगा, 6 महीने बाद देखना पड़ेगा क्या हो। ओके सर, वो 4 महीने बाद देखते हैं, पहले ये सेटल हो जाए। हाँ okay, sir. So currently, sir, we are doing the intraday upload through these allocations through our back office file preparation. So we are facing certain issues in receiving. So we are currently taking the MG02 file for cash segment and MG13 file, which is coming for the FNO segment and currency segment as a provisional. Sometimes it comes delay. So there is a very tight situation within the. Amish bhai, you'll have to handle the problem. We'll all have to handle problem ourselves. So do they are बाजार में सॉफ्टवेयर मिलते हैं जो रियल टाइम ट्रेड देखते रहते हैं, और रियल टाइम जितना चाहिए एमजी तेरा हर मिनट का कैलकुलेट करके आपको दे देंगे। तो we cannot see, सीसी का काम नहीं है कि एंड ऑफ द डे फाइल दो, ये अपना काम है सर। I understand, sir, but having said that, that, as a responsible broker association, when we ask, we have to ask for fair things. ये मिल जाए तो बहुत बढ़िया। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ हर टूर्नामेंट में नया MG13 बना के दे दो ना हमको जो चाहिए हम उठा लेंगे, हम यूज कर लेंगे। से फॉर एग्जांपल MGTM फॉर दैट मैटर, बट उनके सिस्टम प्रोसेसेस उनको भी सीसी चलाने हैं यार, ऐसे ना करो। Okay, sir. So my last question is, sir, we have to, as per the circular that we have received recently, that we can report the final shortfall within T+4 days. So on this en masse, we have to upload this SA04, which is our final file, which where we can upload that this is the top up margins. So can anybody guide? Is it where to be uploaded, because we are unable to find that features? Is it enabled or it is to be still enabled? Toshnewal ji, Kishore ji, I think it's obviously if you could help in this one. वो रीजन अपलोड करने का एक सर्कुलर तो आया है, लेकिन अभी तक देखा नहीं है भाई, तो लास्ट वीक को देखेंगे। Amish bhai, sorry, it's nobody here from NCL who could answer this question, but we'll figure it out, I suppose. Okay, sir. Really appreciate it. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Saurabh ji, your question. एक सजेशन चाहिए था इसमें, जैसे हम रिप्लेस शेयर्स है क्लाइंट के, सुबह रिप्लेस थे तो उसको हमें एलोकेट करने की जरूरत नहीं है, बट ड्यूरिंग द डे क्लाइंट ने वो शेयर्स बेच दिए एंड हमारी ऑफिस ने वो शेयर्स को अनप्लेज कर दिए। सॉरी, पहले I think that Toshnewal ji, some side conversation got broadcasted. So replace shares को क्लाइंट ने बेच दिया। अभी replace shares को now उसको हमें कब ना रिलीज करना चाहिए फ्रॉम द सीसी? व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस कि अगर हमें वो टी डेट को ही करना चाहिए या T+1 डे को करें? टी डेट को कर रहे हैं तो हमारे पास इशू ये था कि हमारा शॉर्टफॉल चला गया फॉर द रीजन दैट क्लाइंट ऑफिस ने रिप्लेस शेयर्स को तो रिलीज करवा दिया बट उसका अर्ली पेन नहीं करवा सके। सो इधर अर्ली पेन करवा, सो MG13 में तो शॉर्टफॉल नहीं है, बट फॉर एलोकेशन पर्पस हमें वो एलोकेट करना पड़ेगा वापस से। So that's interesting. At least in my office, what we do is at 3:30 we run a dummy file and see who are the guys who have repledged but and sold. And at 3:30, based on whatever trade happened, हम लोग repledge release का request डाल देते हैं, which gets processed in half an hour, 1 hour, depending on the system. So by the time we run the final file 5 o'clock, सब जितना बिका माल है वो repledge छूटा हुआ आ जाता है, and then हम लोग early payment करते हैं।
we'll all have to create some jugaad internally in each other office. Now there's a theoretical possibility कि उसने क्या नाम है post closing में काट लिया तो क्या होगा? We'll have to repledge it again, but stuff like that. But sort of this is a very interesting way कि ठीक है ना, repledge माल बेचा मैं कल सुबह अनप्लेज है, कल दिन भर में पेन कर दूंगा. So I would have a problem. That is also a very interesting way of solving this issue. Okay. But when whichever way, अगर आपको even if you did the early pay in on T date, you would still have to do the allocation for that amount, right? No. Or for further purchases, is it? For further purchases, yeah. Yeah. That's a problem. Yeah. Okay. ठीक है. Thank you. In fact, Saurabh, are you with NCL? NCL, yes. उत्तम जी वो क्वेश्चन पूछते जाना ना अपने को थोड़ा पोल. Yes. Saurabh, would you like NCL to permit you to downward allocate even if there's a margin? I don't have an answer right now, Toshniwal ji. I mean, the risk seems to be there, but what if it, zero file chad gaya ya jo bhi hai? So I really don't have an answer in terms of controls. Still seem to be quite weak. So, उस perspective से really don't have a clear answer yet on that. But you have to be on either side, ना sir? हटना चाहिए. But yes, no, you're not sure. तीन होते हैं. ऐसे मत करो. But you see, even that you can't put words in somebody's mouth. Not fair. No. I got his point कि भाई नहीं control रहना चाहिए. I got his point, but yeah. Chintan ji, your question. Hello. बोलिए चंदन भाई. हाँ, I have two questions. One is जो शेयर्स हम रिप्लेस करते हैं एक्सचेंज में और एक्सचेंज उसकी जो प्लेज की फाइल आती है उसमें उसकी वैल्यू 0 क्वांटिटी की वजह से बताती है, तो उसके कारण क्या है कि शॉर्ट एलोकेशन में मार्जिन उसका शॉर्ट दिखाता है. ऐसे जो रिप्लेस वाला आइटम है उसको आपको मार्जिन उसको मैन्युअली एलोकेट करना ही पड़ेगा. क्लियर. अच्छा, लेकिन जो रिप्लेस आइटम जो आपको सामने से क्रेडिट नहीं मिला सीसी से. हाँ, रिप्लेस का हमने तो कर दिया, लेकिन एक्सचेंज में ऐसी कोई मतलब वो प्रूडेंशियल लिमिट हिट हो गया. हाँ, 0 हो गया. हाँ, तो आपको करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा. लेकिन तब तो पहले से पता चल जाता है. नहीं, पहले से नहीं, रिप्लेस करते हैं ना सर, तो वो रिप्लेस तो हो जाता है. एक्सचेंज में से कुछ शाम को पता चलता है. हाँ, शाम को रिप्लेस की फाइल 11 बजे आती है. It's a genuine problem. In fact, we as BBF we have made 2 representations to CCS कि जो अर्ली पेन कर दिया अब उसको उस पे पेनल्टी ना लगाएं अपने आप. मतलब पेनल्टी कैलकुलेशन में शॉर्ट दिखा दो, कैलकुलेशन में भी उड़ा दो. दूसरा रिप्लेस यदि सीसीएल लिमिट नहीं दिया फिर हम रिप्लेस कर चुके हैं, उसको पेनल्टी ना लगाओ. बट सीसीज को अब तक जमा नहीं, हम सीबी में रिक्वेस्ट किए हैं कि बॉस आप कंसिडर करें. सीबीज अप्लाइंग इट्स माइलेज सी बढ़ा. बट चंदन भाई ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन नहीं है अभी फिलहाल. बट नोट कर लिया सर ये बात है. We'll take it up again. और ये सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो बार बार इश्यू आ रहा है, जैसे अर्ली पेन के आज क्लाइंट शेयर बेचता है और उसके सामने नया शेयर लेता है और ऐसा बोला कि एलोकेशन करना पड़ेगा. तो ये नया सर्कुलर आ रहा है एनएससी का कि T+4 के हिसाब से वो आप अर्ली पेन का रिपोर्टिंग कर सकते हो. वो अर्ली पेन है, वो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन एनसीएल वाले को है नहीं, इसका उनसे क्लैरिफिकेशन लेके हम पूछ लेंगे. लेकिन जहां तक कि हम अभी तक जो उनसे बात हुई उनका ये है कि ये जो माल आपने बेच दिया और उसके अर्ली पेन किया तो सेल साइड मार्जिन के लिए ही उनका ये थिंकिंग है. बट अगेन आईसीसीएल भी अभी बोला कि इस पॉइंट पे वो भी थोड़ा विचार विमर्श करें. तो ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है चिंतन भाई, इसका आंसर नहीं है. बट फिलहाल ये मान के चलिए कि जो माल आपने बेचा है उसी का होगा, जो आप उसके सामने माल लिया उसके लिए ये सुविधा नहीं. फिलहाल तो नहीं है, ऐसा है फिलहाल नहीं है. बट हम कोशिश करेंगे उनको कन्विंस करने की कि उसको ऐसे डिफाइन करें तो काम हो जाएगा. बिकॉज सी पॉइंट इश्यू क्या है, बिना मार्जिन के क्लाइंट सौदा नहीं करना चाहिए. तो जब तक नहीं किया तब तक प्रॉब्लम क्या है यार. लेकिन अभी तो ये इंटरप्रिटेशन. ओके, थैंक यू. Riddhi JB Equities, your question please. Riddhi. Kamlesh ji, your question please. Kamlesh ji Modi, your question please. Narendra ji, your question please. उत्तम जी, हम लोग जो शेयर रिप्लेस किया हुआ है आईसीसीएल में, उसका अनप्लेज का फाइल बल्क अनप्लेज करने के लिए ST_U वाला जो फाइल फॉर्मेट दिया है,
क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ने, तो वो उससे ट्राई करते हैं शेयर्स अनप्लेज करने के लिए सीसी से, बट वो फाइल इनवैलिड डेटा करके रिजेक्ट हो रहा है सर। सर आपके फाइल में कुछ मिस्टेक होगा, बस हम लोड करते हैं हमारे हो जाता है। इफ यू कैन शेयर द फाइल फॉर्मेट विद वन लाइनर देन वी कैन। नहीं भाई, so let me I'll take the opportunity. BBF has started a compliance/operation support desk. Email ID is support@locusforofIndia.com. वहाँ पे BBF के फुल टाइम एम्प्लॉइज बैठे हैं आपकी ये सब क्वेरी ही सॉल्व करने का। ठीक है, आजमा के तो देखिए। श्योर सर, थैंक यू। या मेरा फाइल लोड, फॉर एग्जांपल मैं फाइल लोड कर रहा हूँ, रिजेक्ट हो रहा है, मुझे कोई एक सैंपल फाइल देना किसी का जो चलता है, तो हेल्प डेस्क हो सकता है, सपोर्ट डेस्क तुरंत आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सके, प्रॉब्लम समझेगा, 2-3 जन को फोन करेगा, ये मेंबर का प्रॉब्लम है, मुझे करेगा, किशोर जी को करेगा, ललित जी को करेगा, जो हाथ में है उनसे सैंपल लेके बोला आपके कैसे हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो भाई ब्रह्मट जी देखो ये ऐसे होता है। थैंक यू। तो और हो सकता है आपके सवाल का तुरंत जवाब नहीं मिले तो सपोर्ट डेस्क कोशिश करेगा। दिस इज रन बाय द मेंबर्स फॉर द मेंबर्स ऑफ द मेंबर्स, ट्रूली। और कुछ नहीं तो हम सीसी का माथा खा जाएंगे कि आपका चल क्यों नहीं रहा, रोहाना का माथा खा जाएंगे, हम जितेश भाई का माथा खा जाएंगे और रास्ता लेके आएंगे, सोल्यूशन लेके आएंगे। थैंक यू। अनुभव जी, योर क्वेश्चन। जिगर जी, योर क्वेश्चन प्लीज। जिगर दर्जी जी, योर क्वेश्चन। हेलो, या बोलिए सर। जिगर, हमारा एनसीएल है क्लियरिंग एंड वी आर द सेल्फ क्लियरिंग मेंबर। हम लोग मार्जिन के तौर पे क्लाइंट का सिक्योरिटीज प्लेज करते हैं यहाँ पे हमको, लेकिन हम लोग रिप्लेज नहीं करते, ठीक है? तो रिप्लेज नहीं करते, मार्जिन के तौर पे सिर्फ हमारे पास ही रहता है, तो उसको फिर हमको एलोकेशन में फिर मैन्युअली एलोकेट करना पड़ेगा, प्रो का पैसा उसको देना पड़ेगा। सो कैश कंपोनेंट, जैसे सपोज कैश दिया तो वो कैश हम एलोकेशन करेंगे, वो भी कैश में जाएगा। जैसे अब मैं आपका क्लाइंट हूँ, मैंने आपको 100 रुपए कैश दिया, 100 रुपए की शेयर दी, आपने 100 रुपए की शेयर रिप्लेस किए नहीं, ठीक है, आपकी मर्जी, तो आप मुझे 200 रुपए तक एलोकेट कर सकते हो। ओके ओके। एंड सर ये SA1 SA2 फाइल का क्या मीनिंग होता है एनसीएल में? हाँ तो शिवाजी जी, किशोर जी। रिपोर्ट है, ये सर शॉर्ट एलोकेशन रिपोर्ट सर। एंड वो ऐसे उसमें लास्ट कॉलम में जो अमाउंट है दैट अमाउंट इज शॉर्ट एलोकेशन, करेक्ट। ओके ओके, थैंक यू। Ketan ji, your question. अच्छा, here I have to make a point. किशोर जी is very unwell. ठीक है, बहुत तबीयत खराब है, but just to answer the number query he joined in, तकलीफ आ गई. So I think all of us should send him a box of sweets at some point of time. Anyways, yeah, moving on. Ketan ji, your question. Uttam sir. बोलिए सर. Hello. Sir, can we allocate a non-funded part of BG to client? Can you allocate a non-funded part of, not funded, funded part? But ठीक है, तो मेरे हिसाब से yes, I'll explain you why. कि क्लाइंट ने आपको शेयर प्लेज किए, आपने रिप्लेज नहीं किए, और आपको क्लाइंट को एलोकेट करना है, तो क्या करोगे? जो प्रो का बीजी है वही करोगे ना? हाँ, यस सर, ठीक है। सिमिलरली क्लाइंट ने एपीआई किया, सीसी बोलते एलोकेट कर, कहाँ से एलोकेट करेंगे? तो जो अपना प्रो अपना जो फंडेड वाला बीजी है उस पर से एलोकेट करेंगे, और क्लाइंट का पैसा क्लाइंट बैंक अकाउंट में पड़ा है, लेकिन फिर भी हम उसको एलोकेट करना जरूरी है, लेजर में क्रेडिट है इसलिए तो करेंगे, तो यस इट कैन बी एलोकेट। और सर सेग्रीगेशन की फाइल में हमने वो प्रो में दिखाया है नॉन फंडेड पार्ट, तो उससे इश्यू नहीं आएगा ना? कुछ आएगा, इसलिए सेग्रीगेशन को एलोकेशन से जोड़ना पड़ेगा, बट टोटल मोटा यदि आप सही काम करें आपका टोटल तो सही पड़ेगा ही, चाहे क्लाइंट वाइज फिर भी तो ऊपर नीचे हो जाए, टोटल तो सही पड़ेगा ही। तो यदि टोटल सही पड़ा तो यू कैन एक्सप्लेन इट। आप कह सकते हो कि देखो मैं गलत काम नहीं किया, खाली ऊपर नीचे हो गया, तो अच्छी रेगुलेटर भी दे लुक कि तुम्हारा इंटेंट क्या है। अब ये सोचो, सेम एग्जांपल मैं रिपीट कर रहा हूँ सबके लिए, यदि आपने सेग्रीगेशन में दिखा रहे कि क्लाइंट मनी लाइंग विद सीसी 100 रुपया और एलोकेट किया खाली 20 रुपया, तो रेगुलेटर भाई मजाक लगा, बाकी 80 रुपया
अनएलोकेटेड में पढ़ाना फिर भी चल जाएगा, वो 80 रुपए आपने प्रो में डाल दिए, बोलो मजाक है क्या? ऐसे कैसे कर सकते हो? और लिखा वैसे भी सेकुलर में, पैराग्राफ 11 कोई पढ़े तो दैट्स द पॉइंट। लेकिन यदि आपने दिखाया है पूरा बराबर सब कुछ और थोड़ा इस क्लाइंट की जगह उस क्लाइंट के हो गया, तो रेगुलेटरी का एक्शन मिलेगा तो probably be a light action, because there is no intention to do something wrong. There is no intention to misuse, not show a clear use of plain facts. ओके सर। और सर एक सेकंड क्वेश्चन था कि हम लोग TMF और FONCD और हमारा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है ICCL, तो सर हमको क्लास का जो फाइल है वो क्लास के लॉगिन से मिलता है, बट वो हमको लॉगिन क्रेडेंशियल मिला नहीं है ICCL से। Does ICCL give login credentials to TMs? Rohana, No, we don't give login credentials to TMs for class. So sir, उसका solution क्या है? Otherwise तो how can we get the file sir? क्योंकि वो CM को ही राइट्स है क्लास का, तो TM को नहीं है। So basically आप समझो ये तो conceptual issue है। Trading member is a member of exchange and clearing member is a member of clearing corporation. Clearing corporation अपना login खाली clearing members को देगा और trading ये अपना exchange trading member से डील करेगा। अब अपने चाहते हैं ट्रेडिंग मेंबर को सीधा CM का लॉगिन मिले, रोना we can give a view only login ना, राइट सर। सर in fact it's a good thing यदि CM ने कुछ बदमाशी भी की है तो दिखाया नहीं है टीम का डेटा, तो CM को चेक करने का मौका भी मिलता है कि हाँ भाई सब डेटा बराबर है नहीं है। Could you take that as a suggestion? In fact all clearing corporations please give a view only login to the TM, because see point is he's a CM and who are the TMs under CM. It's the data known to you. It's not like मुझे पता नहीं कौन है. Please consider. MCX वाले सब Uttam, दे is रहे हैं this under उसमें। review? Okay, it is under review. Right. Yeah, we provide that access to the trading members ये to देखो view तो the allocation information. Yes, ठीक yes, तो because MCX is M6 में already है, ICCL बोला बता रहा है, I think NCL में भी होगा, I don't know NCL में TM का है, but ठीक है सर केतन भाई, I think it's a good practice that all CC should follow. Thank you sir, thank you so much. मुझे विश्वास नहीं है कि सवाल अभी तक चालू है। Senthil ji, your question please. Senthil Kumar ji, your question. Yes sir. Actually, I would like to know how this EPI fund manually we can allocate. How can you manage EPI manually? Manually allocate, because what I am asking is, suppose the customer is having 1 lakh rupees and he is selling for 1 lakh EPI. Then actually the fund cash part with the CC is 1 lakh only. And he had done Sauda against that also. EPI part also he has done. So if I allocated 1.8 lakh, then it should be reduced from the member, right? No, I'll Senthilji, I'll kind of rephrase your question. There is a client who came to me and sold shares worth ₹1 lakh and purchased shares worth ₹1 lakh against that sale. He has not given any cash. Suppose we take this hypothetical he bought scenario. only 80,000 he had bought. Say 1 lakh. No. Okay. Say 1 lakh round figure. So now, as soon as the two trades happen, CC will charge 40,000 margin minimum. We'll expect a minimum 40,000 margin, 24 plus 24 sale. Correct? Yeah. Yeah. Then if you do early pay at the end of the day, the 24 sale will disappear. Yeah. Only 24 purchase will remain. Yeah. That 24 purchase we have to allocate. Yeah. Now, what is the problem? No, this 20,000 from where from pro. 20,000 I have to from pro. I have to reduce from the pro and I have to allocate, right? Yes, perfect. Okay, yes, okay. Fungible part I have to do. Yes, Mr. Sen. Then last 2 days we are not getting the return files. Which so CC? the same thing NCL. So, for 1st August maybe a problem. Nobody has reported a problem on 2nd August. Then I had done EOD allocation actually. So EOD allocation will come at EOD. Sir. So please do intra allocation. It will be you'll get it much faster. And it doesn't matter. That is a learning. Okay. Today try. Okay, sir. I will try today. All right. Sir.
Kamlesh ji, your question, please. हेलो Anubhav सर। ji? Yes. Yes. हाँ सर, बोलिए कमलेश। आवाज सुनाई है सर? हाँ हाँ जी। कमलेश जी। सर मैंने आज मेरा एक क्लाइंट का पोजीशन जीरो हो गया था, क्रेडिट बैलेंस भी जीरो हो गया था। अभी मैं एनसीएल में जाके उसको जीरो कर रहा हूँ आफ्टर मार्केट आवर्स, तो अभी तक वो उसका जीरो नहीं हो रहा है और फंजीबल में भी उसका इफेक्ट नहीं आ रहा है। फाइल कितने बजे लोड किया? तो उसका इफेक्ट कभी होगा सर? फाइल कितने बजे लोड किया? फाइल मैंने 3:30 के बाद किया है। Toshniwal ji, could you take this one? How quickly should we expect a response? It should work now. सर स्टिल नाउ अभी तक हुआ नहीं है वो चेंज। हेलो। Yeah, Kamlesh Bhai, Toshniwal ji, Kishore ji, any assistance you can give on this? ये डाउनवर्ड एलोकेशन का केस है ना? हाँ, सी क्लाइंट का पोजीशन जीरो हो गया, तो 4 बजे मतलब उसका जीरो है सब कुछ, तो 4 बजे जीरो करके लोड कर दिया, जीरो डाउनवर्ड, तो अभी तक कोई हुआ नहीं है। लेकिन मुझे लगता है वो सिस्टम में पिक मार्जिन को रेफर करता होगा। सिस्टम पिक डाउनवर्ड एलोकेशन के लिए वेरिफिकेशन जो करता है मार्जिन का, वो शायद पिक मार्जिन को रेफर करता होगा। ओ सर लेकिन उनका पोजीशन 2 दिन से है ही नहीं, तो मैंने अच्छा, उसको आज उसका पीक भी नहीं था, एंड कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और मैंने उसका पक्का क्रेडिट बैलेंस भी जीरो कर दिया। उसने गलती से कुछ इंटरडे सौदा कर लिया होगा, पीक आ गया होगा शायद। नहीं एक बार सर, चेक कुछ कर लो। हेलो, एक बार रीचेक कर लो। हाँ जी, मैं अभी चेक करके बोल रहा हूँ अच्छा, सर, अभी ठीक। तक हुआ तो नहीं किशोर था। जी, आज इसका ना पीक है ना पीक, मतलब आज दिन भर में एक भी सौदा नहीं हुआ, कुछ पीक भी नहीं हो सकता। सौदा, उसका बैलेंस मैंने जीरो भी कर दिया मेरा नहीं, लेकिन अकाउंट। हो सकता है उसने मंडे को मतलब 2 दिन पहले डिलीवरी लिया हो, जिसका आज पेन खत्म हुआ और पीक आ गया हो, वो भी नहीं है। सर वो पेइंग पेड ऑफ किया और तो लास्ट वीक में ही खत्म हो गया था, जब मैंने क्रेडिट आज उसको वो आप कर दिया। इनमास में जाकर के वो स्पेसिफिक क्लाइंट कोड के देख लो ना कि उसमें कुछ मार्जिन रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं। हाँ, वो किशोर जी ने इनमास में ऑप्शन बताया था ना, आप क्लाइंट का मार्जिन देख सकते हो, तो वहां जाके इस क्लाइंट का स्पेसिफिक देख लो। हाँ सर, उसमें दिख रहा है उधर अभी भी मार्जिन, देखो कैश एलोकेटेड जो भी है वो। तो मतलब तो हो सकता है फाइल ठीक से लोड दिया, एक बार फिर से लोड करके देख लो तो क्या होता है। एनसीएल वाले को है नहीं, मैं जवाब नहीं दे सकता था, बट ऐसा होना तो नहीं चाहिए। तो इंट्रा ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स ही करना है कि फिर आफ्टर मार्केट कभी भी कर सकते हो, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 मार्केट बजे। के बाद किया, इसलिए पूछ रहा हूँ। ठीक, कमलेश भाई, आपका क्वेरी हम समझ गए, लेकिन इसका जवाब देने के लिए कोई भी यहाँ पे लायक नहीं और है। सर दूसरा मुझे एक चीज पूछना है कि जो अभी हम लोग फाइल भेज रहे हैं, उसमें हम लोग का जो भी शॉर्टेज होता है, तो वो कैसे पता चलेगा? और हेलो, हाँ, कैसे पता चलेगा मतलब? कौन सी फाइल से पता चलेगा कि मेरा ये इतना शॉर्टफॉल गया है, ये गया है, जो अभी ये आप अभी आ रहा है ना फाइल, शॉर्टेज फाइल, तो उसमें जो लास्ट को ऐसे 01 करके ऐसे 01 करके जो फाइल है, लास्ट कॉलम, हाँ लास्ट कॉलम में जो फाइल में देता है वो शॉर्टेज अमाउंट है, और उसका परसेंटेज रहेगा कि वही फाइनल अमाउंट? परसेंटेज बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा ना करो। हाँ, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। परसेंटेज वो सेम जो एमजी तेरे एमजी टीम का जो परसेंटेज है, वही परसेंटेज इस पे। हाँ, तो मतलब 1.07 या 1% जो भी है 0.0 अप टू 5% में जाता है, कुछ दिनों तक चलता रहता है। ओके सर, थैंक यू। अनुभव जी, योर क्वेश्चन प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि क्लाइंट के जैसे कि नॉन प्लेजेबल शेयर जैसे मैंने अगर कभी ले रखे हो या उनको वार पे वैल्यूएट करके मैं उनको लिमिट दे रहा हूँ, बट एक्सचेंज में सीसी में उसकी वैल्यू कम आ रही है, तो ऐसे में क्या एलोकेशन देनी चाहिए? मैनुअल एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने आपको 1 करोड़ के शेयर दिए, ठीक है, उस पर 10% वार है, तो 90 लाख के हिसाब से आपने ट्रेडिंग आर्म में लिमिट दे दिया, आपने रिप्लेस कर दिया, तो सीसी बोलता है मैं तो खाली 60 दूंगा, सपोज, तो 30 की शॉर्टेज हो गई, या तो 30 प्रो में से मैन्युअली एलोकेट कर दीजिए। प्रो में से मैनुअली एलोकेट कर सकता हूँ। ओके सर, एक प्रॉब्लम और आती है, जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि मैं किसी क्लाइंट को अपनी बीजी से फंड एलोकेट कर सकता हूँ बीजी के अगेंस्ट में। बिल्कुल कर सकते हो। एक तो जब रुक जाइए, आप जब सीसी को पैसे देते हो, हाँ, तो बीजी देते हो, एफडी देते हो, कैश देते हो, हाँ हाँ, सीसी उसका ब्रेकअप नहीं रखता हो, तो एक फिगर बना देते हाँ, वो फिगर में कौन सा बीजी कौन सा कैश, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, वो जैसे एलोकेट करना है करो, कोई दिक्कत नहीं।
नहीं वो तो मैं एलोकेट कर दूं, बट मेरे को क्या आ रहा है कि मेरे को क्लियरिंग मेंबर के साइड से प्रॉब्लम आ रहा है। वो मेरे को जैसे कि मैं किसी को क्लाइंट को अर्ली पे ही नहीं आया, कैश में उसने माल बेचा और फ्यूचर में उसका पोजीशन गड़ा है। अब मैं उसको लिमिट देना चाहता हूँ फ्यूचर में उसको अर्ली पेन के बिहाफ पर, तो मैं अपने प्रो को डाउनग्रेड करने में मेरे को बड़ी प्रॉब्लम आती है। वो कहता है कि आपकी लिमिट ही नहीं, आपका मार्जिन यूटिलाइज है ऑलरेडी, आप प्रो को डाउनग्रेड नहीं कर सकते हो एंड ऑल। तो ये इस काइंड की प्रॉब्लम्स मेरे को बहुत आ रही है। प्रो में मार्जिन यदि यूटिलाइज है तो अभी एक सीसी नहीं, आपको प्रो में डाउनलोड कर मार्जिन नहीं यूटिलाइज है, मैं प्रो पे ट्रेड नहीं करता हूँ, बट जो प्रो को अलॉटेड है, मेरा जो सम ऑफ मनी विद बीजी एलोकेटेड है, मैं उसको डाउनग्रेड करूंगा तभी मैं किसी क्लाइंट को अर्ली पेन के बिहाफ पर दे पाऊंगा। किसी क्लाइंट फंड से तो देना नहीं है। आप उस सीसी से अपने सीएम से मीटिंग करो। सर सीएम भी इसमें उसका नाम मत लीजिएगा, गलत बात मार्जिन यूटिलाइज है सर। उसका अभी उसका नाम मत लीजिएगा, लेकिन पॉइंट उससे मीटिंग करो, उसके सेट से मीटिंग करो, उसको समझाओ बाबू आप शायद गलत कर रहे हो, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझो। और कुछ और यदि बहुत ज्यादा अटको कि होता कैसे, तो बीबीएफ के सपोर्ट डेस्क को कांटेक्ट करो, हम भी आपके बिहाफ पे उनसे बात करेंगे। या तो हम सिखा देंगे या कुछ सीख लेंगे। ओके। तो डीम्ड एलोकेशन है ना उत्तम जी, डीम्ड एलोकेशन ग्रेटर देन 90%, वो पोर्शन प्रो का अवेलेबल से अगर बढ़ जाता है तो आपको डाउनलोड नहीं करने देगा प्रो का भी। मतलब प्रो यूज्ड है तो डाउनलोड नहीं करने देगा। प्रो मेरा हार्डली मेरा प्रो 20% पे रहता है। हार्डली मेरा प्रो 20% पे मेरा यूटिलाइजेशन रहता है टीएम एज अ टीएम। स्पेसिफिक प्रो का मार्जिन नहीं, इसके अलावा जो क्लाइंट मोर देन 90% का स्पिल ओवर प्रो में जाता है, वो पोर्शन भी उसमें ऐड करके अगर वो ज्यादा हो रहा है, आप जितना डाउनलोड दे रहे हो वो तो 50% तक ही कंसीडर करेगा ना, वो 50%। अनुभव जी समझिए मेरी बात, प्रो का आपने 100 रुपया लिया हुआ, ठीक है, और आपका निफ्टी में पोजीशन खड़ा है 20 रुपए का, तो 80 फ्री है, आप ये मान के चलते हो। हाँ, 80 फ्री है मेरा। अब हो सकता है आपके दूसरे क्लाइंट काम कर रहे हो जो 90% के ऊपर चले गए, ठीक है। हेलो, हाँ जी। तो हो सकता है बाकी आपके जो क्लाइंट काम कर रहे हैं 90% के ऊपर चलेगा, 95-96% में, तो उनका ऊपर का 4-5% है वो भी प्रो में से कटा हुआ है, वो आपको ध्यान में नहीं होगा। नहीं, मैंने वो सारी चीजें पोजीशंस अच्छा वो सब देख ली, फिर भी प्रो में खाली मैंने सारी पोजीशंस चलो चलिए आपकी सीसी से आपके सीएम से बात करते हैं सर, ठीक है। हाँ, एनमास मेरे को 20% 15% शो कर रहा है कि टीएम यूटिलाइज चल रहा है, so that means मेरी 85% 80% तक तो आपके सीएम से बात कीजिए, कहीं कुछ ओके सर। कोई भी सीएम ऐसा नहीं कि जब वो काम नहीं करने देगा। ओके वो तो करो काम है, अच्छी बात आ रही है। एक्चुअली क्या है कि अर्ली पेन के बिहाफ पे मैं विंडो पे एक्सपोजर नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूं। समझ गया। प्रो के पास खुद के पैसे हैं तो करने दे सकता है, दूसरों के क्लाइंट के पैसे नहीं कर सकते। प्रो में तो मेरा बीजी वगैरह सारा वहां पे डिपॉजिट है, और उसी के बिहाफ पे मैं अर्ली पेन पे लिमिट देना चाह रहा था, तो मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही कि मैं डाउनग्रेड नहीं कर पाता हूँ प्रो को। ठीक, ये आपको सीएम से सेटना पड़ेगा। एनीवे, ओके। Samir ji, your question please. Yeah, you can hear me? Yes. Okay. Achha, my question is again going back to the previous question, where one client is having zero credit with me in the ledger. He has sold worth 1 lakh rupees. I've done the early pay-in. I can buy worth 80,000 for him. But you're saying you have to allocate from Pro even though the ledger balance is zero, that way? Yes. So there won't be any problem? No. Okay. See, I'll tell you why it won't be a problem. What you can allocate. I put a big mail on Google Group. Pata nahi hai Samir, you're not fair, yaar. There is something called minimum allocation, maximum allocation. Okay. Maximum allocation is what you maximum you can allocate. You have what you have shown in the segregation file. Okay. Segregation file में API तो show करता है. Yeah. तो तू allocate कर सकते. Okay. ठीक है. That's the spirit. That's the jar. ये suppose किसी client ने pledge किया लेकिन तो replace नहीं किया. Segregation file में दिखाता है. Right. तो तू allocate कर सकते. Okay. Anything of the client. Suppose the client is given you FD, which you have not placed it, तो अलमारी के अंदर पड़ा हुआ है. Will you show it in the segregation file? Yes, there's a problem. Of course, yeah. If you show it there, you can allocate that much amount. Okay, but then you have to allocate less of the Pro then, less to Pro, right? Yeah, Pro का पैसा किसी और का client का थोड़ी allocate करेगा, खुद का करेगा. Right. Okay, one more request. Recently now, like we are clearing through ICCL, but NSE keeps on sending us margin shortfall explanations every time. I don't know whether. No, listen.
You may be clearing to the clearing corporation, but the job of inspecting you is on the exchange. Are you a member of NSE? Yeah. That they have a right to ask. And are you dealing with clients just because UCC is done NSE? No, that is all correct. So What I'm ICCL saying- shares, ICCL, NCL, they share data with the exchanges. Based on that, exchanges take a report and ask you, "Bhaiya, ye kya ho raha hai?" And you're supposed to explain it. But ICCL wouldn't show the shortfall because in a recent case last week, where I've done the early pay-in, there's no shortfall reported to ICCL. So yet NSE is asking me to share all the early pay-in files, sub files मंगा रहे हैं मेरे So से. ऐसे cases में I request you to escalate the matter to Brokers Forum. Brokers To Forum escalate the matter to whom? to Brokers Forum, your association, Okay. and they will fight for you कि boss मेरे members को तंग क्यों कर रहे हो यार? हाँ मतलब हम लोग नहीं मतलब early pay-in obviously भी- तंग वाली बात है. Okay, please, it was on a lighter vein. Yeah, But yeah. the point is हम ये कह रहे हैं कि भाई dear MIs, there's something, there's a weak link in your system where this data is not getting captured. आप इसको capture कर लो तो you won't raise, there won't be false alarms. Okay, even similar where my client is a CP code trade, like marginable client with CP code, there also NSE is flagging non-collection of margin. Please bring it to the attention of BBF and we'll try to take up on your behalf with Fine, fine. So I'll send a mailer to you all. Ji, Prabhu. Yeah. Thanks, Uttam. Thank you. Yes, my friend. Vasuji, your question, please. Mr. Vasu. Hello. Yeah. Sir, we have a question. This Yes. one, when we upload a file, there are multiple questions. When you give D or U, whether the value given in the line, it is replacing the value or addition or deletion. It is replacing, sir. Replacing. Replacing Then completely. my question is here, when you are replacing the values, why we have to give D and U? Straight away, without that, we can upload. Yeah, that is what, that's how they designed the system. I'm sure there's a logic behind it. And second question is, where S04 file, whatever S0, SA03, short collection, short allocation by file, we received today around 3 o'clock, yesterday's file, Yes. second dated. Yes. Correct. What that we need to rectify today? No, you cannot rectify. There's no way you can rectify it. Only thing you do it T+4, you can give an explanation. If it falls, there is no way you can rectify it. Then And penalty, how penalty? Then they'll charge. That, yes, they will charge. But see, on the same day, how do we rectify that? How do we know which client is allocation is small, short? Then how do we rectify that? Then we can rectify the same day. Now today, if you take so you have. How can I answer that question? Number one, it is not an end of the issue, it's a beginning of the issue. You have allowed your client to trade. You gave limit on the front end. Why did you not allocate at that time itself? By you, I mean us. Sometimes it will be a manual intervention, other system intervention, maybe missed out. How do we know allocation is the shortage for a particular client? You have to take the reports from the NMAS and everything and then do some kind of Excel jugaad or ask your back office software to find your way. Most of us are doing it. So for example, my office 4 o'clock, download everything, then look up, oh, this is short. Oh, please rectify this before 6 o'clock. We all do it. Okay. So we'll all have to find a way, sir. 90% of us have found a way. Back 10% also. And one more question, final. One client, suppose having 100 rupees balance yesterday, there is 100 rupees uploaded yesterday. Yeah. Today that client bought 80 rupees worth of share something, then 20 rupees, I have to make the file in NMAS 20 rupees that client. Okay. Then I'm uploading file 20 rupees for D call D and uploaded the file. System is saying rejecting that higher margin value used because the client whatever 80 rupees used, maybe 25 rupees is the margin utilization. Yes, so, if I'm trying to make it 20, is not reducing. It is not probably. So this is the argument we're having, and that's why we're having a poll. Okay. So anyways, so this is an existing constraint because so that mistakes don't happen. Okay. That is our concern. Yeah, so if it's 100% T20 item, then 100 won't even become 99. Plus that 90, so it's whatever divide by 0.9. So that's another complication. Thanks very much. Yes, Mr. Ross. So I think we have answered all the questions, and on behalf of BBF,
just over to Lalitji. Anyway, there's one more question. Sir, one more, sir, please. We will take Uh, it. yes, So sir. we have Mohit ji, your another 4 question. minutes, and then Lalitji, after that, Mohit ji? Mohit ji, your question. So last one. Kalpesh ji, your question, please. Yeah, hello. Yes. Boliye, sir. Hello, am I audible? Yes, very much. We can hear you. Boliye, sir. Yeah, the question is, suppose I have done the EPI. Can I use that EPI? I have done the EPI cash. Can I use it for future and currency? Yes, you can, but you have to allocate. We need to allocate, right? Need to allocate. And second thing, the MCX have said that they won't be allowing anything end of the day, any benefit of other exchanges. So can you? No, they have not said it. They said we have they have received requests from various quarters to have a similar benefit given by ICCL and CL. Both NCTEX, NCTEX CL and MCXCL have got it. They are considering it. And they will let us know by tomorrow. At least one CCS said, whether they'll consider it favorably or unfavorably. No, because there is only one EOD margin. This thing intraday they would consider, but at the EOD they won't be considering it. That is what they. Sir, they have not yet taken an official stand. So let's wait till tomorrow for them to revert. And regarding this NMAS after 4 o'clock, the NMAS is total down. Do we have anything that what can be done for that? Toshniwal ji, is that a correct statement? No. It's completely down is incorrect statement. There is a delay. There is a delay in response. Okay. We can't. Our funds are being this thing. We can't deallocate. We can't reallocate. On the spot response. The way it's functions in the morning, the after 4:30, it is very tough for us to allocate and deallocate. Sir. No, 20 minutes of time to process the file, and that too particularly in case of CM segment. F4 segment is quite smooth. We are facing, but since we are facing a lot of issues because after 4:30, 5 o'clock, the NMAS is totally. I mean, we are totally stuck with this thing, and we don't get any confirmation. So the funds are getting. No. So point taken. This is the issue. This is understood. This is the issue, right? Resolution has to come from CC. This is a point, and CC is sensitized. Uttamji, update for everybody. There are 6-7 issues got identified at a CC's level, and few of them is getting fixed this weekend. Okay, because morning it functions very smoothly, but this afternoon time is really very tough for us to allocate and deallocate the funds. But CC is aware, sir. CC is aware. CC is aware of this point. And one of the point we are trying to pull is member okay if the downward allocation is allowed, even if there is a margin obligation. Okay. And this is in regard to fasten everything. True, sir. True, sir. Thank you, sir. Lalitji, over to you, sir. Uttamji, 1 second. Uttamji, let us just for 5 minutes discuss this whole process. That what should be the logical way of approaching this allocation process? Okay. कि जब से ये peak margin आया तब से almost all of us have rescheduled our client side payout to around 4 o'clock. Okay. तो जब 4 o'clock 4:30 को client side payout का फाइल आप अपलोड कर दिया, अकाउंट में अपडेट हो गया, उसके बाद है ने आप क्लाइंट ट्रायल बैलेंस ले लो टी देगा, उसमें जितना भी वो क्लाइंट पे आउट करने के बाद क्लाइंट अकाउंट में जितना भी फंड बचा है उसमें से अगर कल का पेन के लिए कुछ चाहिए तो उतना फंड सेटलमेंट अकाउंट में डाल दो, और बाकी का बैलेंस बचा उसमें जितना भी मिनिमम रनिंग के लिए चाहिए उतना रख के बाकी का जो भी है वो फंजिबल में डाल दो कुछ बार सीसी में। इसके बाद आप जितना भी इसके बाद जो एलोकेशन है ना उसका 2 पैरामीटर है। एक पैरामीटर जो फर्स्ट प्रायोरिटी पैरामीटर वो ये है
कि आपको क्लाइंट का जितना भी क्रेडिट है उतना तो एलोकेशन फर्स्ट प्रायोरिटी पे करना ही है। वो एलोकेशन करने के बाद जितना भी क्लाइंट का रिप्लेस और एलोकेटेड केस से मार्जिन ज्यादा है उतना डिफरेंस का एक एडिशनल एलोकेशन का आपका अमाउंट एड अप करना है एलोकेशन में, बस उतना ही करना है। लेकिन अभी सवाल ये है कि भाई मार्जिन का फिगर कैसे लावे, जो मतलब आप लॉजिकली हम एक्सचेंज के ऊपर डिपेंड नहीं रह पाएंगे लंबे समय तक। हमको हमारा ही कुछ वे आउट ढूंढना पड़ेगा कि हम मार्जिन अपने एंड पे ही कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास करेक्ट मार्जिन फिगर वर्कआउट हो जाता है और हमारे पास रिप्लेस का एग्जैक्ट फिगर आ जाता है, रिप्लेस का फिगर अभी एग्जैक्टली आता है, इवन एनमास में भी जो आता है वो फिगर रिप्लेस का करेक्ट ही है, उसमें सिर्फ आज का जो रिलीज है उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो रिप्लेस का फिगर भी है आपके पास और मार्जिन फिगर जो है वो आप कुछ वर्कआउट करने का मैकेनिज्म ढूंढ लो, तो जो भी रिक्वायर्ड डेटा है वो आपको मिल जाएगा 5.5 5.5 तक। और इसी बेसिस पे मैं कर रहा हूं, अब तक मेरा एकदम स्मूथली चल रहा है अलॉटमेंट प्रोसेस। Thank you, Kishore ji. Kishore ji is the unofficial help desk of half the members of this community. Lalit ji. So I see that Anil Toshniwal ji has raised some questions in the chat. I don't know what is the reason he has not asked by speaking. So if he is here, may I request him to ask, please? Please do not hesitate. हमारी क्लास में हेजिटेशन के बिना ही हम आगे आएंगे तो अच्छा रहेगा. आई एम ऑल्सो ए लर्नर लाइक मोस्ट ऑफ अस एंड though whenever I have questions, I have a liberty to ask to Kishore ji और उत्तम जी और तोष्णीवाल जी और वीरेंद्र जी. So अनिल तोष्णीवाल जी आप हैं यहाँ पे? Yes, Toshniwal ji, you have been activated. Please unmute your mic and speak, Toshniwal ji. Sir, Anil ji has also joined. Anil Toshniwal ji. Hello. हाँ अनिल जी आपकी आवाज आ रही है. हाँ. Yeah. Okay. So one question was regarding the downward allocation, which I had raised. Supposing a client has placed a margin and we have allocated that margin to the client, but next day because of some debit, the ledger balance is less, and we want to do a downward allocation, but the system does not allow us. Now, in this case, exchange may consider that we have allocated more than what we are having. But even if you want to do a downward allocation, we are not able to do it. Hello. But there is no bar you are allocating more than what you are having. No, there is a bar, Toshniwal ji. No, there is no bar. Toshniwal ji, chapter, boss, Toshniwal ji, paragraph 11 of SEBI Circular of July 2021. You cannot allocate more than what you have. What is shown in the segregation file? It's a clear compliance issue. So now, though we don't want to do a non-compliance, but this is something beyond us. I think इसके लिए penalty नहीं लगेगी तनिल जी, but you are right. This is a very strong point. I do agree that the right way is that we should not allocate more than 80% or 90%, so that such situations can largely be taken care of. Which we will try to do it. We are trying to do it, but whatever has happened on the last 2-3 days, we have had some situations like this. But if you allocate less, then anyway there is a penalty, na? हाँ. Client को सदा नहीं करने देगा, जी ये बोल रहे हैं. If you allocate short than the client obligation, penalty is anyway there. No. Where supposing his margin was 2 lakhs and I had allocated 2 lakhs, that was fine. Next day, the ledger balance is 2 lakhs, the margin may be say 2,10,000. So penalty तो उसको वैसे भी लगेगी वो margin shortfall के हिसाब से कि 210 margin है and 180 is available. But allocation में it may be considered that I have wrongly allocated more. Where the situation is I want to correct that wrong. It's not wrong. It's just that the Anil ji point is taken. I think we'll take it up. But आपका point दुरुस्त है. Okay. Second point I am having is that when we are doing the first को जो इन्होंने window extend की थी 6 से 9 के बीच में, so we did some downward revisions, we did some upward revision.
and we got message successfully accepted and inquiry window में गए तो आ रहा था, but next day ऐसे जो ऐसे file जो आई SA01, there the downward revision is reflected but the upward revision was not reflected, and as a result one client के case में we are getting a shortfall and the penalty will be levied. So I spoke with the clearing of help desk, so they said आप email डालो, but no response from that side. So I believe first को their system had lot of issues. I just request that first की penalty नहीं लगावे, because unallocated में वो amount बता रहा है, ऐसा भी नहीं कि unallocated में zero है. Unallocated में that amount is lying in that portal. I don't know if others have had some issue like this. First was a struggle for many of us, but second onwards, I've not heard much chatter. नहीं first का issue है मेरा, second का है ही नहीं. First को सबको first में ही नहीं, मेरे को success आया. Success आने के बाद how can that go? मेरी mistake ये हुई कि मैंने snapshot नहीं लिया. That is just that now henceforth I have said कि कुछ भी manual allocation कर रहे हो, तो you should have that snapshot, so that we have a stronger case to fight if penalty is levied, because we can't recover this penalty from the client. Anuj will take up this point further. Let's see. Okay, lastly, third point, retention of funds and securities में exchange wants us that if the margin is say 7 lakhs and I have securities of 10 lakhs and funds of 4 lakhs. So whenever I'm doing retention, the whole margin will be first adjusted against securities. So, we already taken it up with SEBI and probably. Yeah, because इसमें क्या है कि allocation में you want us to have margin. I understand. So my only request is that they should allow that funds placed with exchange and allocated should be considered for this retention. नहीं तो otherwise round trip होगा funds का. It is a headache for the client as well as us. It affects people like us. 3-in-1 वालों को problem नहीं. True. We have discussed this issue with the highest level at SEBI. And अच्छा, last एक और point है. ये after we do allocation on the portal NMAS में there is an option to download the file, और वो downloaded file shows a stale margin. 3 या 4 बजे का वो status बताता है. Updated status नहीं मिलता है. Updated के लिए we have to wait for the next day, because whatever changes you are doing, if you want to just press that Excel file download where all client code के साथ what is the latest allocation, we don't get it. Is it possible for the exchange to give that download on a real-time basis, incorporating all changes? We will send the session to NCL session. Yeah, thank you so much. Some CCs are doing it, probably NCL refresh की जरूरत है, हो जाएगा. Yeah, NCL में we are with NCL तो वहाँ नहीं हो रहा है, NMAS में नहीं हो रहा है. आप NMAS बोले वैसे ही समझ गए. ठीक है. Right. Chali, thank you so much. Okay. Thank you once again to all the clearing corporations who have joined today. They regularly, give time to us. They remain for longer hours with us. Sometimes even late, beyond 6:30. Today we are winding up before 6:30, and thanks to all the participants who have actually come up and raised their questions and doubts and suggestions also. And from our team, I wish to thank Team BPF and Toshniwal ji and Virendra ji Mansukhani and Kishorji Kansagra and Uttam ji, who has actually unlimited energy and unlimited, spontaneous responses to all the questions that we all have. And I think this session we decided to have yesterday, and he is always ready. In fact, if you ask him to do a session even tomorrow, he will be again ready for doing that. So thank you, Uttam ji. Thank you so very much. With that, I think we can close the session for today. And if required, we will have a further session next week. I think the crux of the matter is if we get a penalty waiver for a week or so, I think most of us will be happy. So with the guidance of Uttam ji, we will take it up further with the regulatory authorities. Thank you so much. Have a good day, sir. Thank you so much. Thank you, Clean Corporations. It's always a pleasure to have you and resolve member queries. And they keep on promising that I keep on promising the Clean Corporations. हमारे webinar में attend करके Q&A आप जवाब दोगे तो आपके 100 फोन कम हो जाएंगे अगले दिन. That's right. 50 email भी. And at least one CCS confirmed ना ऐसा होता है. So they're actually helping each other. That's the whole objective.